जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची। गुड इवनिंग भगवान मोदी। ओके आज हूँ आमर माराथन क्लास जो हम आमर एप्रे जो माराथन क्लास होबार अच्छी तार आम डेमो क्लास दबा। तो डेमो क्लास रे आम टोटाली कम्युनिटी उपरे आज डिस्कशन हम एंड कम्युनिटी उपरे जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी आम से सब जिनस को देखा। ओके जो मैंने भी जॉइन करचंती चैट रे हाई लिखि दियंतु एंड समस्त को टे शेयर कर दियंतु ताकि समस्त जॉइन करिगला परे आमे आकु कंटिन्यू करियो। मु भी आकु टे शेयर कर दोची। ओके जेमती हमर ऐप रे क्लास होबा कथा ठीक सेमती क्लास होबो, किछि भी चेंजेस रहिबो नाही एथिरे। एंड समस्ते मते आज टे क्लियर कर दियंतु जे ऑडियो क्लियर अछि कि नाही एंड बिकॉज काली बहुत सारा प्रॉब्लम हेतिला ऑडियो जो एंड स्क्रीन भी क्लियर अच्छी कि नहीं मते कही दिंतु। ओके टी खाली रिप्लाई कर दिंतु स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर अच्छी कि नहीं। यस सर क्लियर अच्छी वॉइस ठीक अच्छी। गुड इवनिंग पूजा। ओके स्टार्ट करिवा लेट करिवानी बेसी। गुड जो मैंने भी अच्छी टिके शेयर कर दिंतु ताकि सब जॉइन कर जातु फटाफट। वॉइस क्लियर अच्छी ओके लेट स्टार्ट बेसी लेट करिवानी कहीं टाइम वेस्ट करने पे हम पाखे टाइम नहीं। The vaccine that leaves permanent scar in babies is measles, pentavalent, DPT, BCG। कौन हम आंसर डी समस्त आंसर बढ़िया अच्छे ठीक अच्छे। तो आमर आंसर कौन है ना BCG। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Human anatomical organ are kept in which colored container in biomedical waste disposal। कौन हम आंसर आपन को स्क्रीन क्लियर अच्छी कि नहीं मत खाली कह दिंतु बिकॉज जदि स्क्रीन रे किसी प्रॉब्लम थी तो मु क्वालिटी से अनुजाई ये करी। क्लियर स्क्रीन देवकृष्ण थैंक यू। ओके सर शुभुनी आई थिंक क्लियर अच्छी तुम टे ये कर निजर वॉइस बढ़ाओ तो क्लियर हो। ओके आम ये सागे सागे डिस्कस करवा। रेड रे आमर कौन जाऊँगी ना रेड रे आमर जेति की प्लास्टिक आइटम, येलो रे कौन जाऊँगी आमर समस्त आंसर बी। ओके येलो रे जाऊँगी आमर एनाटॉमिकल वेस्ट। व्हाइट रे कौन जाऊँगी व्हाइट रे जाऊँगी व्हाइट को एक्चुअली आम कौन कहूँ ना पंचर प्रूफ कंटेनर बोली कहूँ जो थे कि आमर जाऊँगी ना नीडल शार्प आइटम जी से जाऊँगी आमर व्हाइट रे। ब्लू रे कौन कौन जाऊँगी जी ग्लास आइटम से गुड़ा कौन जाऊँगी ना ब्लू रे लाइक भायल है गला एम्पल है गला से गुड़ा जाऊँगी आमर कोथरे ना ब्लू रे। तो आमर एटार आंसर कौन है ना येलो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। प्रिकॉशन यूज्ड व्हेन केयरिंग फॉर रुबेला पेशेंट गोटे जिते आम रुबेला पेशेंट को ये करचे तो आम कौ प्रिकॉशन नौचे ड्रॉपलेट कांटेक्ट यूनिवर्सल हैंड वाशिंग कौन आंसर कौन फटाफट। थ्री ए ड्रॉपलेट बढ़िया। मधुस्मिता पत्र हैंड वाशिंग हेनी यार आंसर कौन हम ना ड्रॉपलेट हम ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा।
Providing health education about the environmental hygiene to the community people is an example of social communication, structural communication, therapeutic communication, formal communication. कौन होगा आंसर? फटाफट आंसर करंतु. 4A आछी, 4B आछी आंसर. ओके, C, A, B सब मिसिक आछी. ओके. Providing health education about the environmental hygiene to the community people is an example of कोटा ना हमरो therapeutic communication. देवकृष्ण बढ़िया आंसर, ठीक अछि. हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. In following which is a communicable disease? कोटा हमरो communicable disease? MI, CVA, leprosy, peptic ulcer. फटाफट आंसर करंतु. 5 नंबर सी. समस्तंकर आंसर सी आछी. बढ़िया आंसर. देखो आपण मैंने चिंता करुवे जे ये कहीं मुझे ये क्वेश्चन देखी जेहेतु आपंकर सीबीटी मोड रे एग्जाम हम तो सही केस रे आमर कौन होना सी मे बी इजी क्वेश्चन को भी जापे मे बी आपंकर जो 25 क्वेश्चन रोचे मोर प्रैक्टिकल बेस ता ऊपर को भी सी जीव तो बोथ ऊपर जिनस डिस्कस कर सबुठ बेसी मिस्टेक हुए कॉमन जो वन लाइनर क्वेश्चन रे थाए बेसी डाउट से क्रिएट हुए बिकॉज आपण मैंने से ही फसीजे. ओके तो यार आंसर कौन हम ना 5 नंबर सी लेप्रोसी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर ऑफ को ईयर रे एस्टाब्लिश हेची? आंसर करंतु फटाफट. 6 नंबर आंसर कौन हम? INC एक्ट केबे पास हेतिला आ INC केबे एस्टाब्लिश हेतिला? जल्दी लिखंतु. INC एक्ट पास केबे हेतिला? 1947 एक्ट पास हेतिला. एस्टाब्लिश केबे हला? 1948 रे. देवकृष्ण 6D 1907 रे एक्ट पास हैला. 1948 रे होची हमरो एस्टाब्लिश हेची. तो यार आंसर हबो जो माने एटा दोचंती भूल एटा 18 अछि. एठी 1947 अछि जेहेतु एठी एस्टाब्लिश ईयर मागिछि आ किछि एठी आपनकर ये नाही तो आपण एठी देबे. गुटे गुटे जगह रे आपण देखिबे 1848 हबोनी एठी भूल मारिछि देवकृष्ण. देखो मु एठी जानि सुनि कि 1848 देछि बिकॉज़ 1948 देथिले आपण सब 1948 को जाइतंते. 1950 भी हबोनी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Clinical features of chickenpox includes skin rashes, fever, pain in back, all. कौन होगा आंसर? फटाफट आंसर कर दिंतु आपण. 7 नंबर रश्मि सोरेन फीवर. ओनली फीवर हुए चिकनपॉक्स रे आ किछि हुए नी. 7 नंबर डी समस्तंकर आंसर आछि ऑल. बढ़िया आंसर, ठीक अछि. आपणकर चिकन पॉक्स रे स्किन रैशेस भी देखा हबो, फीवर भी देखा हबो, पेन इन बैक भी देखा हबो. तो आपणकर एठी आंसर कोन हबो ना आंसर हबो ऑल. हैला जे जे माने जणे गुटे मार दबो एटा फीवर होची मार दबो किबा पेन इन बैक गुटे मार दबो किबा स्किन रैशेस मार दबो तो आपणकर आंसर भूल हेजो. एठी आंसर डी रे ऑल देछि तो एटार आंसर हबो ऑल. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा.
causative organism of Kala Azar is Flavivirus fibricus, Yersinia pestis, Coxiella brunetti, Leishmaniasis. कौन होगा आंसर? 8 नंबर आंसर करंतु फटाफट. लक्ष्मी प्रिया जेना सी, भगवान डी, देवकृष्ण लेश्मेनिया. ओके, एठी मैं आंसर कर दूची आपण मानको पई. तो हमर फ्लाविवायरस फिब्रिकस को केस रे होची ना येलो फीवर हला. ଗୋଟେ सेकंड एटा होची येलो फीवर. एर्सेनिया को केस रे ना प्लेग. पेन टा तो एक्चुअली मते एते असुविधा करछु. कोक्सिलिया ब्रुनेटी को केस रे ना क्यू फीवर. तो एटार हमर आंसर कोन हबो? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला अजर इज लेशमेनिया. ठीक अछि, एटा हबो आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. In the following, which is not included in emergency contraception? Include नुहे. Levonorgestrel tablet, copper tea, dampa, oral contraceptive. आंसर करंतु समस्ते. जल्दी जल्दी आंसर करंतु. 9B राजश्री समस्तंकर बी आछी आंसर. एठी नॉट इंक्लूडेड देछि सेटा तो देखंतु. एठी नॉट इंक्लूडेड देछि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रे कोटा इंक्लूड नुहे. समस्त बी लिखुचंती. अरे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव रे कोटा इंक्लूड नुहे. एगुडा सब इमरजेंसी रे जीवो. एटा जीवो नाही. बुझछन तो. डैम्पा कौन समस्त लिखंतु. फुल फॉर्म लिखंतु. एबे समस्तंकर सी आसले आंसर. ठीक अछि, बढ़िया. तो डैम्पर फुल फॉर्म होची डिपोट. देखिए किए लिखले एटा. देवकृष्ण. डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट. डैम्पा. बढ़िया. एटारो मते को एटा इंजेक्टेबल इंजेक्शन को केते मंथ रे यूज करा जाय. आउ आपरे मोटे सिनारियो देबी तो मते आंसर करिवो. ओके, तो सिनारियो होची गोटे इसी अछि जे आपण पाकू एज ए सीएचओ आपण बसचंती. तो आपण को पाकू गोटे इसी आसीला. इसी कपुल आछंती. तो हस्बैंड पचारुची आपण को एज ए सीएचओ जते बळे आपण बसचंती. सर मो वाइफ 2 ईयर परे कंसीव करिया पई चाहउचंती. तो आमे कोन करिवु ना अंतरा इंजेक्शन. डैम्पा को जानचंती आपण अंतरा इंजेक्शन बोली भी कहा जाय. तो अंतरा इंजेक्शन से केतेटा नबो. से जेहेतु 2 ईयर परे कंसीव करिवो तो से टोटल केतेटा अंतरा इंजेक्शन नबो. कोंतु फटाफट आंसर करंतु. ऑप्शन एठी किछि नै. आपण एज ए सीएचओ बसचंती तो केतेटा इंजेक्शन से टोटल नबो जेहेतु आपण को गोटे पेशेंट रो पार्टी पचारुची सेटा मैटर करे. तो आंसर करंतु. से 3 मंथ रे गोटे इंजेक्शन नउची. 2 ईयर परे से कंसीव करिया पई चाहूची. तो आपण टोटल केतेटा इंजेक्शन नबो. राजू सुनील 4. अच्छा मते 4 रो रीजन कोंत. 4 इंजेक्शन जे माने कहउचंती 4 रो रीजन कोंत. 2 years 24 month divided by 3 is equal to 8 injection. Devakrishna totally wrong. Totally wrong.
8 इंजेक्शन जेते जण कहउचंती से माने टोटली रॉन्ग बिकॉज मु आपन कहउची काहे की होबो देन 1 ईयर परे गैप होबो जेते बेले आपण गोटे वर्ष रे केतरा आपण 3 मंथ रे नउचंती तो टोटल केते 12 मास तो एठी केतरा नेला 4 हैला तो आपण 2 वर्ष रे कहउचंती बट अंतरा इंजेक्शन रे इफेक्ट केते मास पर्यंत रहे 7 मंथ गोटे मिनिट मु एटा उठी से लिखुछ तो अंतरा इंजेक्शन हमरो ता इफेक्ट रहउची 7 मंथ तो एबे कहंतु केतेटा इंजेक्शन से नबो 1 ईयर गैप रे नुहे राजू देखो फास्ट तो सी चारटा नहीं गला हैला तो आउ ता पाखरे केते मास रहउची 5 मास तो सी आउ गुटे ऐड करिवो तो टोटल 5टा इंजेक्शन देबे तापरे लास्ट इंजेक्शन रो इफेक्ट 7 मास जेतु रहइबो से टोटल 5टा इंजेक्शन नबो हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ट्रैकोमा is an infectious disease of ear conjunctiva and cornea nose and pharynx cervix आंसर करंतु फटाफट बुझी हलानी भगवान मध्य कोटा बुझी पालेनी मते कहंतु देखंतु मु आपन कहि दउ चाउतरे 1 ईयर रे से टोटल नउची 4टा इंजेक्शन सेकंड ईयर रे से जदि पुणी 4टा कंटिन्यू करिवो गोटे इंजेक्शन रो इफेक्ट जदि आपण सिंपल 1 इंजेक्शन भी गोटे अंतरा इंजेक्शन गोटे लेडी की दउचंती तार इफेक्ट 7 मंथ पर्यंत रहइबो बट आमे ताकू 3 मंथ पर्यंत गारंटी नउचे जे हां से भितरे से कन्सीव करिवो नाही बट तार इफेक्ट 7 मंथ पर्यंत रुहे जतो बेला आपण फील्ड को आसीबे एंड से विषय रे ये करिवे तो देखिबे जे ताकू 7 ये करा जो मैराथन क्लास रे कोन थ्योरी पढ़े होबो की ना थ्योरी पढ़ाबनी ओनली क्वेश्चन डिस्कशन आपन को ओके मु मैराथन क्लास विषय रे भी गोटे मिनिट कहि दउची जे देखंतु मैराथन क्लास रे ए क्वेश्चन रे आंसर करी कहू छला यार आंसर कोन हैला हमरो ना कंजक्टिवा एंड कॉर्निया मैराथन क्लास विषय रे मु गोटे मिनिट कहि दउची मैराथन क्लास रे आपन मानन को ए भलिया क्वेश्चन डिस्कशन मिलिबो आमे 7 pm रो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा 9 pm मझिरे 30 मिनिट्स रो ब्रेक ओके देन 9:30 टू 10:30 और 11 पर्यंत चलिबो होची हमरो क्लास सम टाइम्स कोन हबो कि जेतो बेले धर मो पाखरे एक्स्ट्रा टाइम अछि आमे 6 pm भी स्टार्ट करि दबा जेटा कि आपन को इन्फॉर्म करा जिवो 6 pm रो स्टार्ट करिबा एंड मझिरे आमो हिसाब रे आमे निजे ब्रेक नबा हला एटी काहे ना बाहरिया लोक केही नाहंती आ हमरो मेन मोटिव होची आमे जेते जल्दी परिबा सब प्रकार रो क्वेश्चन कंप्लीट करिबा ओके नेक्स्ट कोन जिंसो करा जिवो आउ आपण माननकू जेते बेले मैराथन क्लास विषय रे मु कहूची तो मु आपन को आ गुटे जिंसो देखै दउची शो ही करे दउची मैराथन क्लास रे आपण मानक पई मु ऐड कर दउची आउ किछि सर टिके साउंड बढ़ांतो पेंसो साउंड पूरा फुल दिया हैची आ मु चिल्लै की भी कहूची हला ट्राई करंतु निजर फोन रे टिके ये बढ़ेबा पई तो एठी मैराथन क्लास रे आपण देखिबे जते बेले मु आपन को पई गोटे फ्री कंटेंट ऐड कर देची जोटा की होची हैंड रिटन नोट्स हला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमें किछि भी डिस्कस करबा जेटा कि हमें कहूचे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जोटा कि श्रेया मैम नेबे एंड आपन को ए देखंतु गोटे लास्ट हमें वीडियो जो करथिले आपन को वीडियो आपन को रिकॉर्डिंग मिली जिवो कोनोसी असुविधा नै सपोज आपन लाइव अटेंड करि पानांती कोनोसी कारण बसतुरु आपन सिंपली जिबे आकु 2x स्पीड रे प्ले करिवे आपन क्वेश्चन रो आंसर करिवे आउ आपनकर काम हे जिवो नेक्स्ट आउ कोन दिया जिवो आपन को नोट्स तो दिया गला आ परे मु आउटे जिंसो करबी सेटा होची एठी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ऐड करबी सपोज आपनकर सीएचएन क्लास होबो तो सीएचएन पई मु किछि क्वेश्चन लगभग 300 टू 700 क्वेश्चन आपन को मु पढिबा पई देबी प्लस मु अलगा क्वेश्चन जोटा की डिस्कस करबी कोन होची
सी होची सी पाखापाखि आम 300 to 500 क्वेश्चन गोटे टॉपिक रे आमे कवर करबा जोटा कि आमे पर सब्जेक्ट 1 ରୁ 2 डेज भितर नेकी चलचु हला। नेक्स्ट कौन करबा ए सब जिनस तो देली या सहित एडमिट कार्ड जेबे आसीबो से टाइम रे मु गोटे जिनस लॉन्च करबी जोटा होची हमरो 2000 टू 4000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोगुडा मु बाछि की रखिछि हला जोटा कि आपन को मिली जीवो को केस रे मिलिबो आपन एडमिट कार्ड जेबे आसीबो सेबे देखिबे ऐप रे आपन को शो करिवो किछि प्राइस थिबो तार जोटा कि आपनकर लास्ट मिनिट रिवीजन हाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4000 देखो पूरा फिक्स नंबर तो नहीं क्वेश्चन तैयारी चलची जो जहाँ भी फिनिश हम सेतकी ही आपन को मिलिबो जे मु गोटे सर्टन नंबर कहि देबी से ऊपर हम सेटा नय 2000 टू 4000 भितर क्वेश्चन मिलिबो ताकू भाई रट्टा मारो जाओ एग्जाम हॉल को आ किछि दरकार नहीं हैला ता सहित हमर एई सब जो जिंस पार सब्जेक्ट वाइज आपन क्वेश्चन दिया जिवो से क्वेश्चन को भी आपन को पढ़ी की कंप्लीट करिवार अछि। तो यही जिनसटा आपन को 2000 टू 4000 जटार प्राइस मे बी 299 और 399 रहइबो सेटा भी यही सब जिनस रे इंक्लूडेड अछि प्लस आउ कोन देबी देखंतु जो दिन मु मैराथन क्लास लॉन्च करथिली से भितरे केवल गोटे जिनस इंक्लूडेड थिला जोटा कि होछु केवल लाइव क्लास जेंति कि एबे हमें क्वेश्चन डिस्कशन करूछु बट एबे मु सेथिरे नोट ऐड कली मु एथिरे क्वेश्चन ऐड करछि एक्स्ट्रा जोटा कि आपन को पढिया पय मिलियो। हाँ एटा पय आपन मते टिके टाइम देबे गुटे रु 2 दिन बिकॉज़ सब्जेक्ट वाइज मु सब जो गुडा रेडी करछु सेडा को रेडी करी कि एज पीडीएफ फॉर्मेट आपन को देबी आपन को ऐप रे शो करिवो। नेक्स्ट आउ कोन कोन दिया जिवो आपन मान को आपण मानू किसी प्रैक्टिस करने मे बी प्रैक्टिस सेट मु 5 ରୁ 7टा ऐड करी हैला एतकी जिनस आपण मानक पई रहिबो ता सहित आउ जहा दरकार भाई देखो मोर ए जो प्रोग्राम टा करूची यार मोर गोटिए मोटिव मोर 100% सक्सेस रेट दरकार जोथि पई कि आपनकर जदी किछि एक्स्ट्रा दरकार पड़िला गोटे जिनस को छाड़ी टेस्ट सीरीज को छाड़ी मु एथरे इनक्लूड करि परिबि मोर कोनोसी असुविधा नै मोर रिजल्ट दरकार जेतकी पैसा दउछ सेतकी रे मोर काम ऐप चलिबो हैला। तो याको करबा एप्लीकेशन नेम ड्रीम अचीवर ऐप डाउनलोड करंतु हैला आउ सेठी आपण सब जिनस पाई परिबे सेठी आपण को सब प्रकार रो जिनस मिलिबो लाइक जो आमरो एग्जाम होबो कोन ना जो सीबीटी मोड होबो हैला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट सेई पई एई जो 20 टेस्ट रहउची एटा सीबीटी मोड रे रहउची हैला। तो चलंतु क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एटा हला मैराथन क्लास आपनकर जदी किछि दरकार ऑलरेडी आपनकु 45% मिलुची ऑफ तो आपण देखि परिबे एबे चलंतु क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रग यूज्ड इन एमडीटी इज एमडीटी रे को ड्रग यूज होची रिफामिसिन डैप्सोन क्लोफाजामाइन ऑल कौन होबे आंसर एमडीटी कौन ना मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट एमडीटी होची मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट को केस रे यूज होची ना लेप्रोसी केस रे यूज होची। तो आंसर कौन होबो फटाफट आंसर करंतु समस्ते सर केते जण जॉइन करलेनी मोर नेट केते अच्छा सर केते जाय गलानी कंटिन्यू सेठी ही चलची बेसी आगे नो हला। तो एटा हमर आंसर कौन होबो फटाफट आंसर करंतु समस्तंकर आंसर आछी ऑल ठीक अछि समस्तंकर आंसर एटार आंसर होबो ऑल हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा tuberculosis is predominantly spread by tuberculosis predominantly spread हुए कहा द्वारा फोमाइट्स ड्रॉपलेट फूड वेक्टर कौन होबे आंसर फटाफट आंसर करंतु समस्ते 12 नंबर कौन होबे आंसर जल्दी जल्दी आंसर करो बहुत क्वेश्चन अछि
एयरबोर्न थिले एयरबोर्न हेइथांता मोस्ट कॉमन बट एटी जहाँ अच्छी आंसर करंतु से हिसाब रे ओके समस्तंकर आंसर कोन आसी ना बी ड्रॉपलेट आ ड्रॉपलेट होची ठीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा treatment of second category patient in 2HRZES3 here 3 means एठी 3 कौन मीन करूची these medication are given thrice in a day these medication are given 3 times in a week these medication are given to 3 days these medication are given for 3 months कौन होबा आंसर फटाफट आंसर करंतु समस्ते These medication are given 3 times in a week. देवकृष्ण बढ़िया 13B समस्तंकर आସୁଛି ओके करेक्ट आंसर कौन हबो 13B हला जो माने राउंड करते कहतलो भाई देखो मु टिक मार्क कर दउची सेटा ही आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the major route of transmission of hepatitis A रो ट्रांसमिशन रो मेजर रूट कौन रोची फिको ओरल रूट पेरेंटल रूट सेक्सुअल कांटेक्ट पैरेनल कौन हो आंसर 14 नंबर ए ए ए समस्तंकर ए आंसर आସୁଛି ठीक अछि समस्तंकर देखंतु प्रिपरेशन आपण हेइचंती बोली आपणकर मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक रहउची सर 13 नंबर टिके एक्सप्लेन करिथांते एटी एक्सप्लेन कोन करबी देखो ए मेडिकेशन टा केते थोर दिया होची ना गोटे वीक रे 3 टाइम दिया होची एठी एक्सप्लेन कोन करबी त मेडिकेशन डोज होची टीबी जो रहउची हमरो से हिसाब रे तार मेडिकेशन 3 टाइम वीक गोटे वीक रे दिया होची सिटी 3 रो मीनिंग पचार छी ना देखो गोटे मिनिट एटार आंसर हला ये गोटे क्वेश्चन बैक करिया ना एटी देखो एटी किसो पचार छी जे जदी एटी 2 रो पचार थांता मीनिंग तो 2 ऑन जाई आपनकर आंसर अलगा आस्तांता एटी 3 रो मीनिंग पचार छी 3 रो मीनिंग कोन होची ना ए मेडिकेशन टा दिया होची 3 थरो दिया होची गोटे वीक रे दिया होची हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in following which is not a virus borne communicable disease ए भितरु कोटा virus borne communicable disease नुह पोलियो मिजिल्स टिटानस एड्स आंसर करंतु समस्ते फटाफट लाइक करके समस्ते शेयर करंतु 88 पहुंचे 89 पहुंचे 100 क्रॉस करिवानी अब लाइक के करना एते जाए लाइक करंतु फटाफट ओके 15 रो कोन हो आंसर समस्तंकर सी आछी आंसर बढ़िया हमर आंसर कोन हबो ना टिटानस अच्छा टिटानस रो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखंतु फटाफट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटानस होची गुटे बैक्टीरिया द्वारा हेई थाए तो तार कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोन देवकृष्ण फास्ट मेसेज करचंती क्लस्ट्रिडियम टिटानी एग्जैक्टली करेक्ट हैला तो हमरो कोन होबा आंसर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटानस होची क्लस्ट्रिडियम टिटानी बढ़िया समस्त आंसर बढ़िया पूरा प्रिपेयर अछंती छुआ एग्जाम पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा risk of cold chain failure is highest at कोल्ड चेन फेलियर होबार आपणकर रिस्क कोठू अधिका थाए पांचटा एग्जाम भितर जो पांचटा शिफ्ट हबो ए क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत अधिका गोटे शिफ्ट रे आसीबार चांसेस अछि तो आंसर करंतु फटाफट समस्ते the state and regional level the district level the PSC and CSC and PSC level the sub center and village level कौन होबे आंसर
सब सेंटर सब सेंटर सब सेंटर सब सेंटर इन विलेज लेवल ओके तो आमर आंसर कौन हम ना सब सेंटर एंड विलेज लेवल ये क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट अच्छी कहीं देखो आपन को लगुव कॉमन क्वेश्चन बट ये कॉमन क्वेश्चन ही एग्जाम रे पड़े है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा causative organism of malaria is malaria रो causative organism कौन ई हिस्टोलिटिका जेटा कि होची हमरो एंटामाइबा हिस्टोलिटिका देन होची ए लुम्ब्रियो कोडाइस जोटा कि हमें कहूचे एस्कारिस लुम्बियो कोडाइस देन होची हमरो डी मेंडिनेसिस जोटा कि हमें कहूचे ड्रांकुलस मेंडिनेसिस लास्ट होची हमरो प्लाज्मोडियम तो आंसर कौन हबो 17 नंबर डी समस्त आंसर भाई एते फास्ट आंसर समस्त ठीक आंसर पूरा प्रिपेयर छ ओके हमर आंसर कौन हबो ना प्लाज्मोडियम ओके मते कहंतु ई हिस्टोलिटिका जो हैला सेटा हमरो काहारो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ई हिस्टोलिटिका काहारो आंसर करंतु लेखंतु फटाफट देवकृष्ण फास्ट आंसर करचंती बढ़िया एमियोबियासिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा MDT in NLEP given for treatment of paucibacillary leprosy is कौन हम ना रिफामिसिन 600 mg once monthly dapsone 100 mg daily and clofazamine 300 mg once monthly supervised and 50 mg daily self administered rifampicin 600 mg once a month and dapsone 100 mg daily for 6 months single dose of combination of 600 mg and of ampicillin and 100 mg of dapsone none of the फास्ट जिनस होची एठी हमर एमडीटी कोन ना एमडीटी होची मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट एमडीटी हैला हमर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ओके तो एनएलईपी कोन फास्ट जिनस आउटे जिनस ना एनएलईपी होची हमर नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन सबू देख कम्युनिटी सबू जिनस मन रखि जे आपणकर शॉर्ट फॉर्म एग्जाम रे आसीबार चांसेस अछि जेति कि भी लाइक एनवीडीसीपी एनएलईपी एगुडा सब मन रखि ता सहित जो जो डेडिकेटेड डे अछि हमर ताकू भी मन रखि ओके इराडिकेशन प्रोग्राम तो एठी हमर आंसर कोन हबो समस्तंकर आंसर कोन आछी ना 6 अरे कि 14 नंबर अरे 18 नंबर आंसर को ओके 18 नंबर ए समस्त आंसर करचंती 18 नंबर आंसर कोन हबो ना 18 नंबर रो आंसर हबो बी मल्टीवेस्युलरी लेप्रोसी केस रे आपणकर हेतांता ए बट एठी कोन पचारिची एमडीटी इन एनएलईपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पाउसीवासिलरी लेप्रोसी एठी देखंतु पाउसीवासिलरी जेहेतु देइची सेठी हमर आंसर कोन हबो ना बी हबो रिफामिसिन 600 mg once a month दिया जिवो एंड डाप्सन 100 mg डेली फॉर 6 मंथ दिया जिवो इन केस ऑफ जल्दी दिया हेइथांता हमर मल्टीवेस्युलरी लेप्रोसी केस रे हैला एटा हेइथांता बी हे सॉरी ए हेइथांता को केस रे ना मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी केस रे
ओके नेक्स्ट देखिबा आपण मानकर चार्ट कहीं आसुनी रे मते नेक्स्ट क्वेश्चन treatment of second category of TB patient is 2HRZES3 here H means एटी H कौन मीन करछि आइसोनियाजाइड पायराजिनामाइड रिफामिसिन इथाम्ब्यूटल आंसर करंतु समस्ते ओके HRZES यार समस्ते फुल फॉर्म लिखंतु जल्दी लिखंतु चार्ट रे H फॉर आइसोनियाजाइड ठीक अछि बाकी मुझे आपको लिखि दूसरी ये जिनसटा मन रखिए यहाँ भी एग्जाम रे आसबार चांस अच्छी एच रे हैला आमर आइसोनियाजाइड आर रे कौन होची आर रे हैला रिफाम्पिसिन ओके हैंड रिटन को कहीं माने एठी मो हैंड राइटिंग को कहीं जीवेनी बहुत खराब एक तो ये पेनटा लिखी होनी किस ना कि मुझे जानी पारनी ओके जेड रे होची हमरो पायराजिनामाइड ई रे कौन होची ई रे होची इथाम्ब्यूटल ए भाई समस्त आंसर ठीक पूरा बढ़िया से लिखुचंती ओके एस रे कौन ताने एस रे लिखो समस्ते स्ट्रेप्टोमाइसिन बढ़िया ओके ए जिनसटा को नोटिस करेंगे आउ एठी 2 जो अच्छी 2 रो मीनिंग होची हमर एवरी 2 मंथ हला एठी काय होला एठी 2 जो अच्छी 2 होची एवरी 2 मंथ आउ 3 जो अच्छी 3 होची 3 टाइम्स इन वीक हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in the occurrence of SARS and other pandemic which of the following is the most important role of nurse in epidemiology epidemiology रे कोटा हमर रहउची मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ प्रमोशन डिजीज प्रिवेंशन सर्विलांस केस फाइंडिंग फटाफट आंसर करंतु समस्ते भगवान मोदी डिजीज प्रिवेंशन आउ कहार कोन आंसर आछी सर्विलांस 20C ओके एठी हमर आंसर हबो कोन ना सी डिजीज प्रिवेंशन हबनी सर्विलांस हबो हमर आंसर समस्तंकर सी किछि पिला बी दउचंती बी हबनी डिजीज प्रिवेंशन हबनी मोस्ट इंपोर्टेंट रुहे सर्विलांस हला जो मानकर भूल होची से माने प्लीज करेक्ट करनियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु leprosy containing more than 5 skin lesion is known as paucibacillary single lesion leprosy paucibacillary leprosy multibacillary leprosy all आंसर करंतु फटाफट कौन हम आंसर 21 नंबर कौन हम 21 नंबर डी दउचंती समस्ते जदि मोर देन 5 स्किन लेसन अच्छी एठी पचारिची 5 स्किन लेसन अच्छी माने ताको आमे कहूचे मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी हला 21 सी हबो आंसर जो माने डी दउचंती प्लीज करेक्ट करनियंतु हला 5 रु अधिक जते बेले होची आमे ताको कोन कहूचे ना मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी जदि ऑल होंता तने आमे काहे कि तने गुटे ना तो रहंता बुझछन ना सी हबो आंसर सर वॉइस बहुत स्लो आछी
ମତେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ମାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ କଥା ହେବି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ମାଇକ୍ କୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଭଏସ୍ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଏସ୍ ସମସ୍ତେ ଭଏସ୍ ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉସି ବାସଲାରୀ 1 ରୁ 5 ଟିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଭଲ ଭଏସ୍ ଏବେ ଭଲ ଆସିଲା ଭଏସ୍। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Treatment of MDR multi-drug resistance TB involves all of the following drugs except kanamycin, pyrazinamide, rifampicin, ethambutol। फटाफट आंसर करंतु। 254 क्वेश्चन अछि। एते धीरे धीरे गले सारी परिवानी। 22 नंबर कौन हबो आंसर? समस्ते ए दउचो। Treatment of MDR multi-drug resistance TB involves all of the following except आंसर करंतु समस्ते। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये कोटा आमर इनक्लूड नुहे। समस्तंकर आंसर कौन आछी ना कानामाइसिन। समस्ते ए दउछ। अरे ए हबोनी रिफाम्पिसिन एड नाही। सी हबो आंसर। ज्योतिर्मय साहू कानामाइसिन हबोनी। 22 नंबर सी हबो रिफाम्पिसिन हबो आंसर हैला। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रे इन्वॉल्व रहुनी। आगो को क्वेश्चन आसीबो से क्वेश्चन रे भी आहुरी जिंस क्लियर कर देबी हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। कहना मु जदी सबुडा एठी डिस्क्राइब कर देबी आगो क्वेश्चन गुडा ए रिलेटेड भी अछि तो मु सबुडा रे आंसर एका बेले कहि देकी पळैली। तो मोर से क्वेश्चन स्लाइड रो मीनिंग रहइबनी सेत पई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी इंक्लूड्स डॉट्स, बीसीजी वैक्सीन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एमडीटी। एटा भी भूल करिवे। जानछि छ माने एटा भी भूल करिवे। प्राइमरी प्रिवेंशन कौन हबो? विजय लक्ष्मी साहू डॉट्स। प्राइमरी प्रिवेंशन आपनकर डॉट्स आछी। 23 नंबर आंसर कौन हबो ना बीसीजी वैक्सीन फास्ट दिया हबो। सेकेंडरी होची हमरो डॉट्स होची। अरे ये पेन डॉट्स हैला हमरो सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन होची ना बीसीजी वैक्सीन। एमडीटी कौन एना एमडीटी होची हमरो लेप्रोसी पाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड स्मॉलपॉक्स फ्री बाय WHO ऑन केबे हेतिला? अप्रैल 7 1977, मे 8 1980, जुलाई 11 1987, मे 5 1982। कौन हो आंसर? फटाफट आंसर करंतु। अब प्लीज एबे केही मते ऐप रे हो किंबा व्हाट्सएप रे हो किछि जिंस पचारंतुनी बिकॉज मो लाइव नउची तो आपण मानकर आंसर मु करि परिबिनी वर्तमान हला। वंस लाइव सरला परे म आपणकर जहाँ भी डाउट थिबो म ताको सेठी ये करबी जहाँ भी जो रिलेटेड भी आपण मेसेज करछन हला। ठीक अछि आंसर करंतु फटाफट। 24 8 में 8 में बढ़िया। ओके हमर एटार आंसर कोन हबो ना वर्ल्ड केबे स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर हेतिला 8 में 1980 रे डिक्लेयर हेतिला। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा।
a patient gets infection from indwelling catheter, it is an example of हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आउ होची कंटामिनेशन। आंसर करंतु फटाफट। कौन आज आम लाइव रे 100 जन पहुंची परिवानी? शेयर करंतु यार। 35,000 छुआ परीक्षा दउचंती आ आम 100 पहुंची पारने। 25A 25A अरे इंडवेलिंग कैथेटर द्वारा इन्फेक्शन होची राजश्री। इट पेशेंट गेट इन्फेक्शन फ्रॉम इंडवेलिंग कैथेटर। कौन हो आंसर? आउ थरे देखंतु आंसर कौन हो? बी हबो नोजोकोमियल इन्फेक्शन हबो। एटा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सर एथर केते जण फॉर्म फिल अप करचंती? 35,000। आपनकर OSSSC वेबसाइट रे सब जिंस आ कि दिन परे शो करियो, व्यस्त होंतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The population served by a subcenter in plain area is plain area रे केते होची हमर population? 1000, 5000, 30,000, 80,000। बी ओके ठीक अछि। आंसर हमर प्लेन एरिया रे होची 5000 आउ हिली एरिया रे 3000। ओके बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मुझे मार्क करे, मार्क न कले आपण माने कहि के रखुनांती। ड्यूरिंग Montauk test PPD is inserted in। PPD हमें कौन कोडी इंसर्ट करछु? आर्म रे, फोर आर्म रे, थाई रे, बटक्स रे। आंसर करंतु 27। फोर आर्म बढ़िया। किए देचंती सी। थाई रे हुए नी PPD Montauk टेस्ट। PPD टेस्ट जो हमर हुए फोर आर्म रे टेस्ट हुए। PPD कौन? PPD तो कहि दउचंती। PPD कौन? PPD होची हमर अरे PPD प्यूरिफाइड PNR प्रोटीन डेरिवेटिव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The patient that come in category third of dots are new sputum smear positive cases, relapse cases, sputum smear negative but not seriously ill patient, all। आंसर करंतु। कैटेगरी थर्ड रे कौन आछि? 28C। भगवान मोदी 28C समस्त सी। ओके तो आमर कैटेगरी 1 रे आसिला कोटा? न्यू स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस होची कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 रे कोडा आछि ना आमर रिलैप्स केस होची कैटेगरी 2 हैला। थर्ड कैटेगरी रे कोडा आछि ना स्पुटम स्मीयर नेगेटिव बट नॉट सीरियसली इल पेशेंट। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। टाइम रिक्वायर्ड टू रीड Montauk टेस्ट इंपोर्टेंट हला।
केते टाइम रिक्वायर्ड संग संग आंसर करंतु सी 48 to 72 hours required. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा screening of a woman above 35 year of carcinoma cervix by using the pap smear is a method of देखिए जो प्रिभेन्शन रोचे प्राइमरी प्रिभेन्शन सेकेंडरी प्रिभेन्शन टर्शियरी प्रिभेन्शन प्राइमोडियल प्रिभेन्शन एई उपरु आपणकर एवरी शिफ्ट रे गोटे क्वेश्चन आसीबा कंपलसरी तो सब प्रिभेन्शन को आपण भलसे देखिकी जाइतिबे ओके 30 नंबर रो आंसर कोन हबो 30 नंबर बी ठीक अछि सेकेंडरी प्रिभेन्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेक्टर ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलिस वाइवाक्स एडिस मस्किटो आंसर करंतु समस्ते बी 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 ठीक अछि फीमेल एनोफिलिस मस्किटो होचे मारो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सर बहुत स्लो आसी वॉइस जदि वॉइस स्लो आसी समस्त को वॉइस स्लो आसु कि वॉइस समस्त को स्लो आसु कि टिके रिप्लाई कर दियंतु नो सर स्मिता तमे तम फोन चेक करो क्लियर एंड लाउड वॉइस थैंक यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल वैक्सीन टिटेनस टॉक्सॉइड बीसीजी कॉलेरा ओपीवी आंसर करो फटाफट डी 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 ओपीवी ठीक अछि आपनकर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the minimum contact time required for the chlorination of water to take place chlorination of water होबा पई केते टाइम लागुच आंसर करंतु सी समस्तंकर आंसर सी ठीक अछि 30 मिनिट टाइम हमको लागि थाए क्लोरिनेशन ऑफ वाटर होबा पई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइन केते बळे कम्युनिकेबिलिटी डिक्लाइन हो जाए आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर ड्यूरिंग प्रोडर्मल पीरियड एट द टाइम ऑफ इरप्शन आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश आंसर करंतु 34 सुचिस्मिता ना सर कोनटा नो सर मु बुझ परलेनी ओके 34 नंबर सी समस्तंकर आंसर देवकृष्ण तमर आंसर कोन आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस ठीक अछि आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस आपनकर कोन होउची ना मिजिल्स रो कम्युनिकेबिलिटी डिक्रीज हे जिवो माने टोटली डिक्लाइन हे जिवो कम्युनिकेबल होबो नाही जेते बळे आपनकर रेस अपीयरेंस होउची टाइम ऑफ इरप्शन होबो नाही हला नेक्स्ट क्वेश्चन Koplik spot are the clinical feature of pertussis, chickenpox, measles, cholera. Answer करंतु सी 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 ठीक अछि measles रे हमरो Koplik spot देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन
A woman using diaphragm for contraception should be inserted to leave it in place for at least how long after intercourse? केते टाइम पर्यंत छाड़िबा दरकार? 6 आवर, 12 आवर, 1 आवर, 28 आवर? आंसर करंतु। ए ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। One basic health worker MPW for 1000 population was recommended by कहा द्वारा रेकमेंड होइतिला? कमिटी रो गुटे क्वेश्चन कंपलसरी। जेतिकी भी कमिटी अछि किए कोन देइथिले ताकू भलो से पढ़ी कि जिबे, गुटे क्वेश्चन कंपलसरी पाइबे हला। कौन कौन ऑप्शन अछि? चड्डा कमिटी, मुखर्जी कमिटी, भोरे कमिटी, मुदलियार कमिटी? ए ठीक अछि। ए जे माने आंसर दउचंती ठीक अछि। सस्मिता ओझा सी हबनी, चड्डा कमिटी हबो एटारो आंसर। जेतिकी सब कमिटी अछि ताकू भलो से रीड करिकी जिबे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। One of the principle of health education is authenticity, evidence, manpower, credibility. कौन होबे आंसर? 37 ए गला, 38 रे आंसर कोन? आरती 38 बी, लक्ष्मी प्रिया 38 ए, स्मिता सेठी बी। जो माने भी ए बी ऑथेंटिसिटी एविडेंस एगुडा दउचंती हैला, आपनकर आंसर बिल्कुल भूल अछि। आपनकर आंसर एटार होबो कोन ना क्रेडिबिलिटी। अरे पेन कोन चेंज होला? आंसर कोन होबो ना क्रेडिबिलिटी, डी होबो आंसर। जो माने डी देचंती 38 रो सेटा होबो ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। sunken eye, hollow cheeks, subnormal temperature, decreased urine output, washerman's hand are the features of kahar features? measles, dehydration, overhydration, polio? कौन होबे आंसर? पूजा हेम्ब्रम ओभर हाइड्रेशन केमती है? आपनकर सनकेन आए जेतेबेले आसी जाउची सेतेबेले आपनकर प्योरली जिंस जाउची डिहाइड्रेशन को हैला। तो हमर एटार आंसर कौन होबो? बी होबो आंसर हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। A method used for individual health education in the community is? कौन मेथड यूज होची? काउंसलिंग एंड इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कशॉप, रोल प्ले? आंसर करंतु। फोर्टी कौन होबो आंसर? ए डी। ओके, एटार होबो आंसर कौन ना काउंसलिंग एंड इंटरव्यू होबो आंसर। गोटे मेथड जेटा यूज होची इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन इन कम्युनिटी, सेटा होची काउंसलिंग एंड इंटरव्यू। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Which of these vaccine are recommended at birth according to national immunization schedule? national immunization schedule हिसाब रे हमरो कोटा recommended रहुची at birth? BCG, DPT, OPV, BCG hepatitis B, OPV, DPT hepatitis B, OPV, BCG hepatitis B, DPT? कौन होबे आंसर? बी 41 बी। ओके,
41 बी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन डॉट्स फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट। थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट मानक पई ड्यूरेशन केते रहउची? 6 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ। आंसर करंतु। कौन होबे आंसर? और समस्त 41 नंबर आंसर आछी। 42 नंबर आंसर करंतु। बी 6 मंथ, सॉरी बी के लिखचंती? नेहा बी हबनी, ए हबो, 6 मंथ हबो। ठीक अच्छे। जो मानकर टिके टिके मिस्टेक होची से माने गोटे काम करंतु, कम्युनिटी को आउ थरे पढ़ंतु। इजी क्वेश्चन अछि, वन लाइनर क्वेश्चन अछि, आपनकर करेक्शन हेइ जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिक is conducted in PSC under NRHM for lifestyle disease? लाइफस्टाइल डिजीज पई NRHM द्वारा कौन कंडक्ट करा होची PSC रे? एनसीडी क्लिनिक, डायबिटिक क्लिनिक, हाइपरटेंसिव क्लिनिक, पेन एंड पैलेटिव क्लिनिक। को क्लिनिक होची? 43 आंसर करंतु। स्वर्णप्रभा बी, डायबिटिक क्लिनिक हो नहीं, भूल। डायबिटिक क्लिनिक होनी, हाइपरटेंसिव क्लिनिक होनी हैला। सेटा आपनकर सेटा एका बेले जीवो आपनकर एनसीडी क्लिनिक। एनसीडी होची कोन ना हमरो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रोची। तमर एटर आंसर कोन हैला ना एनसीडी क्लिनिक ए हबो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Rabies is transmitted by the biting of dog, rat, mosquito, human। कहा द्वारा होची rabies? 44। ओके, ए समस्त आंसर ठीक अछि। आपनकर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The period of 12 5-year plan of the government of India। 12 5-year plan केबे हेतला? 2010 रु 2015, 2012 रु 2017, 2011 रु 2016, 2013 रु 2018। 12 5-year plan केबे हेतला? 12 5-year plan हेतला हमरो। समस्त आंसर करंतु। देवकृष्ण 2012 रु 2017। जो माने 45 ए आंसर दोचंती भूल अछि। 45 बी हबो आंसर। 2012 रु 2017 हेतला 12 5-year plan गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक अछि। आ गोटे जिंस मु आपन कहि दउची, जो हमरो संडे फ्री टेस्ट होबार थिला सेटा हमें हमरो ट्यूसडे कर दबा। ओके, आपन को सेटा भी फ्री मिलिबो। 100 मार्क रो एज सीबीटी मोड रो जेमती हुए सेमती होबो। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू एबे आज कंडक्ट हेई परिला नाही, तो हमें ताको 2 दिन परे कंडक्ट कर दबु हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जो माने भी ऐप डाउनलोड करनांती से माने ट्यूसडे फ्री टेस्ट, हां ट्यूसडे फ्री टेस्ट होबो। आपण मानकु समस्तंकु एग्जाम रे पार्टिसिपेशन करिवार अछि। आपनकु एक्सपीरियंस मिलिबो केमती हमें सीबीटी मोड टेस्ट दोचे। तो आपनकु फ्री रे मिलुची। ड्रीम अचीवर ऐप डाउनलोड करंतु आउ फ्री रे आपण एग्जाम पार्टिसिपेट करंतु। एटलीस्ट जानंतु जे केते मार्क आसुची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीटेनस इज स्किन रैशेस, ट्रिस्मस, नेक्स्ट होची फीवर, एनोरेक्सिया।
आंसर करंतु ट्राइसमस। ओके दीपक मिश्र ड्रीम अचीवर आज्ञा ड्रीम अचीवर ऐप डाउनलोड करंतु आपण जहाँ भी टेस्ट सीरीज हो मैराथन क्लास हो आपण सेठी पाई परिए। ओके एडार हमर आंसर कोन हला 46B। एप नेम सर आउ थरे कहंतु एप नेम रुहंतु मु आपन को एप रो लिंक ही शेयर कर दउची चैट रे तो आपण माने जो माने डाउनलोड करी नाहंती ऐप को से माने ऐप कर डाउनलोड करी नेबे। ओके मु आपन को पिन कर दउची चैट रे सेटा पई वरीड हुंतुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which activity is considered as health promotional activity। आंसर करंतु मु खाली चैट रे दे दउची आपन को लिंक टा। समस्त आंसर आछी 47D all of the above। ओके which of which activity is considered as health promotional activity। ऑप्शन होची effective public participation focusing on people at risk of specific disease IC material जेटा कि होची हमर information education communication activity and all of the above। तो हमर आंसर कोन हबो ना all of the above हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन malaria डेंगू टाइफॉइड फाइलेरिस। आंसर करंतु समस्ते जल्दी जल्दी आंसर करंतु मु आपन को लिंक दे दोची गोटे सेकेंड मु चैट रे पिन कर देबी लिंक तो आपण माने सेठू जो माने भी डाउनलोड करी नाहंती हमरो डाउनलोड करी नेबे हला। प्लेटलेट काउंट हमरो कोथरे कम होची ना डेंगू रे हमरो प्लेटलेट काउंट कम होची। मु चैट रे पिन कर देची आपण माने ये कर नेबे हला डाउनलोड कर नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा causative organism of enteric fever Vibrio cholerae salmonella typhi salmonella paratyphi both A and sorry both B and C कौन होबो आंसर। आंसर करंतु समस्ते फटाफट। फोर्टी नाइन बी डी बी सब मिसिकी आछी समस्तंकर 49B राजश्री 49D। ओके तो हमर एठी आंसर कौन हबो ना बोथ बी एंड सी causative organism of enteric fever salmonella typhi B और salmonella paratyphi B। तो हमर एठी जेहेतु बी एंड सी ऑप्शन रे देइची आपण ओवर एक्साइटेड है कि जे हाँ मते क्वेश्चन आछी ए चक्कर रे भी ए भूल हुए बहुत सारा पिला ए भूल भी करंती। तो हमर एठी आंसर कौन हबो आंसर हबो डी हबो आंसर हला एडा हबो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा causative or causative organism of amebosis is कोंतु मु कहितले आपण मान को प्रीवियसली भी जे जो क्वेश्चन मु एठी एबे कहूची तार नेक्स्ट सेम टाइप रो क्वेश्चन आपण को आगु को भी देखिया को मिलबो। एटा मु ऑलरेडी डिस्कस करि देइची यार आंसर कोन थिला ना कोंतु ऑलरेडी डिस्कस अछि 50A ठीक अछि आपणकर ई हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
The result of Montauk test are read after केते टाइम पर रीड होची समस्तंकर आंसर 51 कहंतु 49 को के आंसर करछंती 51 बी 51 बी आंसर हबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in following which age group is considered most sensitive for getting infection old age adult children infant कौन हो आंसर 52 ए डी सी सब आंसर अरे 52 रो आंसर हबो डी बिकॉज इन्फांट रो कोन होउची ना हमर इमेच्योर इम्यूनिटी सिस्टम रहउची सो सेथ पई हमर एटार आंसर कोन हबो ना 52 डी प्रायोरिटी रे इन्फांट जीवो yes because immature रहउची हमर इम्यूनिटी सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The International Yoga Day is celebrated every year on केबे सेलिब्रेटेड होची 21 मई 21 सेप्टेम्बर 21 जून 21 जनवरी आंसर कोन हबो समस्त कहितली सबू डे गुडा को भलो से पढ़िबे बिकॉज डे रु एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि हमर आंसर कोन हबो सी स्किप देव कृष्ण स्किप कर देलो ओके एटा भी गोटे भलो हैबिट जो क्वेश्चन ता आपन को आसोनी माइनस मार्क को हटेबा पई आपन स्किप भी करि परिबे जोटा कि बहुत भलो डिसीजन तो हमर एटा आंसर कोन हबो जून हला ओके 26 रो हमर योगा रो थीम कोन अछि 2026 रो योगा थीम कोन के जानि चंती हमर योगा फॉर हेल्दी एजिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the chief regulator of immunomechanism is chief regulator के रहउची हेपाटाइटिस पीपीडी एलिसा टेस्ट बी लिम्फोसाइट सप्रेसर टी सेल कौन होबे आंसर ज्योतिर्मयी साहू बढ़िया योगा फॉर हेल्दी एजिंग ठीक अछि ओके नेक्स्ट 54 रो आंसर करंतु 54 सी 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 एठी आपन को पचारिची कोन देखंतु चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यूनोमेकानिज्म पचारिची आपनकर इम्यूनोमेकानिज्म रो चीफ रेगुलेटर देवकृष्ण कोन हबो डी परफेक्ट सप्रेसर टी सेल होची आपनकर इम्यूनोमेकानिज्म रो चीफ रेगुलेटर हला तो आपनकर आंसर कोन आसीबो 54 डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिप्थेरिया मेनली इफेक्ट कोउटा को इफेक्ट करूची रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम
सॉरी एटी टिके भूल अछि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जगह रे नेप्रोडक्टिव ही अछि हला एटा आर आंसर करंतु 55 कोन हबो समस्तंकर ए ठीक अछि आंसर रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the dimension of health that implies with the notion of perfect function of the body is physical dimension, mental dimension, social dimension, emotional dimension. Answer करंतु समस्ते 56 कौन हबो ए ठीक अछि फिजिकल डायमेंशन हबो हमर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the patient that comes in category 2 of dots are exclude एठी include exclude accept एई सब टर्म गुडा को मेनली फोकस करिवे एग्जाम रे जते बेले आपण माने क्वेश्चन करूचंती ऑप्शन कोन देची रिलैप्स केसेस फेल्योर ऑफ ट्रीटमेंट केसेस एक्स्ट्रा पल्मोनरी सीरियसली इल केस आउ डिफॉल्ट ऑफ ट्रीटमेंट कोन हो आंसर कोन होला पिला कमी गले काहे की हो करो आंसर करो 57 रो आंसर कोन होबो एक्स्ट्रा पल्मोनरी सीरियसली इल पेशेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अगेन वॉइस क्लियर अछि कि नै आपण माने ऑथोरिटी कंफर्म कर देबे infectious stage of plasmodium is infectious stage of plasmodium कोन रहउची हमरो ट्रोफोजाइट स्पोरोजाइट मेरोजाइट क्रिप्टोजाइट यस क्लियर अछि वॉइस ठीक अछि आंसर करंतु समस्ते ओके हमरो आंसर कोन होबो 58 बी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जननी सुरक्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड अंडर कहा अंडर रे स्टार्ट हेतिला CSSM NRHM MCH ICDS कहा अंडर रे हेतिला समस्ते फुल फॉर्म लिखंतु सब जिंसर NRHM ठीक आंसर अछि मते सबुडार फुल फॉर्म दरकार फुल फॉर्म लिखंतु समस्ते एटार आंसर NRHM हबो ठीक अछि CSSM कोन फास्ट लिखंतु CSSM कोन CSSM होउची हमरो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड ओके NRHM तो जानि चंती नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ओके NRHM लिखिबी ना ठीक अछि MCH कोन मदर चाइल्ड हेल्थ केयर ICDS कोन मदर अरे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH होची मदर चाइल्ड हेल्थ केयर हबोनी
ସମସ୍ତେ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ MCH ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆପଣ ଇଏଟା ଲେଖନ୍ତୁ MCH ର କୋଉଟା କୁହାହଉଛି maternal and child health program ओके ICDS कौन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस MCH है maternal and child health program ICDS कौन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा step ladder fever sore throat abdominal pain cough are the features of kaharo polio meningitis typhoid fever MI आंसर करंतु समस्ते आ जो माने भी मैराथन क्लास नवा पई चाहउचंती परचेज करनियंतु काली 7 PM पूर्वरु बिकॉज आपनकर 45% ऑफ क्लोज हे जिवो तापरे आंसर करंतु समस्त फटाफट सी ठीक अछि टाइफाइड फीवर नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is a mortality indicator कोउटा disability rate prevalence rate incidence rate life expectancy at birth कौन होबो आंसर 61 रे आंसर करंतु समस्ते 61 डी होबो आंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following group of disease do not require quarantine कोटारे quarantine require नुहे एबोला virus disease or COVID-19 disease plague and cholera tetanus and rabies yellow fever and avian flu कौन होबे आंसर 62 ठीक अछि 62 होबो हमरो सी समस्तनकर आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा chlorine tablet required to disinfect the water केते tablet हमर रिक्वायरमेंट रहउची 1 tablet जोटा 0.5 mg रहउची in 15 liter of water 20 liter of water 10 liter of water or 8 liter of water आंसर करंतु समस्ते 1 tablet in 20 liter of water तो हमर एठी आंसर कोन हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the government of India announced the first national health policy in the year को year रे first national policy हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करतिला 1951 1983 1977 1991 आंसर करंतु समस्ते
कौन हम आंसर ना 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी माने कौन? डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, नन ऑफ द अबव। आंसर करंतु। 65 ए ठीक अछि, समस्तंकर ए आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Kala Azar is transmitted to men by the bite of vector. कौन हो आंसर? बी। ओके, तो हमर एडी आंसर कौन हो? बी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। In following which match is incorrect? DPT vaccine, IM route, BCG vaccine, ID route, measles vaccine, IM route, hepatitis B vaccine, IM route। आंसर करंतु समस्ते। आपण आंसर करंतु, मु जस्ट गोटे मिनिट रहुछि। हेलो, ओके, यार आंसर कौन हबो? 67 आंसर समस्तंकर सी 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 ठीक अछि। 67 ओके, 67 रो एठी सर 67 सी इनकरेक्ट। एठी गोटे जिंस भूल देइची हला, इनकरेक्ट मैच एटा हमर हबो एससी रूट हला, एससी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The patient that come in category of first dots are, कैटेगरी फास्ट रे को माने आछुंती? आंसर करंतु समस्ते। फटाफट आंसर करो, बहुत क्वेश्चन अछि, गोटे दिन रे सारिवार अछि हमको। ओके, the patient that comes in a category first dots are new sputum smear positive cases, relapse cases। ऑलरेडी एटा मु आपण मानको बुझे देछि। आपणकर न्यू केसेस आछी कोटा
ना न्यू स्पुटम स्मियर पॉजिटिव केसेस होची आपनकर कैटेगरी फर्स्ट, रिलैप्स होची कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड होची स्पुटम स्मियर नेगेटिव बट सीरियसली इल पेशेंट। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, मेथड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द लाइव वैक्सीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कोन को होची ताकू सेठी देवकृष्ण सेठी पचरा हैतिला जे कैटेगरी थर्ड रे कोन थिला सेठी मु एक्सप्लेन करथिली एंड एटा सेम क्वेश्चन बट एठी कैटेगरी फर्स्ट पचारी छी। ओके एटार समस्तकर आंसर कोन आछी कोल्ड चेन आंसर ठीक अछि आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थेरिया इज डिप्थेरिया रो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोन रहउची फिकल ओरल रूट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सेक्सुअल कांटेक्ट, ऑल कोन हो आंसर 70 बी होबो ठीक अछि। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो माने भी करछंती से मानकर आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किए देथिले रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, हिपोक्रेटस, जोसेफ लिस्टर किए देथिले आंसर करंतु समस्ते 71 बी ठीक अछि लुइस पास्चर देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ प्लेग आर किए रहउची नेचुरल रिजर्वायर फील्ड माइस, गार्बेल्स एटा कोन संक्स एंड ऑल आंसर करंतु समस्त फटाफट कोन हो आंसर 72 फटाफट आंसर करंतु कहारी आंसर आसुनी 72 डी स्किप ओके 72 ए एटी हबो ऑल हबो आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, treatment of category 2 of patient of TB indoors is 2HRZES3 here 2 means already मु कहि सारची आपनको कोन हो आंसर 2 means कोन B ठीक अछि 2 means these medication are given for 2 month 2 मास पई दिया जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, according to the national malaria control strategy the epidemiology type of malaria are ट्राइबल malaria, rural malaria, urban malaria, seasonal malaria कोन हो आंसर जो माने भी अछंती टिके लाइव को शेयर कर दियंतु हला फटाफट शेयर कर दियंतु। आंसर कोन होबो ना सीजनल मलेरिया ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, the number of all current cases of a disease at a point of time is called point incidence, point prevalence, time prevalence, period prevalence कोन हो आंसर आंसर करंतु फटाफट पॉइंट प्रिविलेंस ठीक अछि आंसर आपण मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज बीसीजी वैक्सीन रो हमरो स्टोरेज टेम्परेचर कोन रहउची 8 to 10 डिग्री सेल्सियस 10 to 12 डिग्री सेल्सियस 2 to 8 डिग्री सेल्सियस 6 to 11 डिग्री सेल्सियस कोन हो आंसर फटाफट आंसर करंतु
सी ठीक अच्छी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस आंसर आपनकर ठीक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रोबोट कोच डिस्कवर्ड द इटियोलॉजिक एजेंट ऑफ टाइफॉइड स्मॉलपॉक्स ट्यूबरकुलोसिस पोलियो कोटा हमर रोबोट कोच डिस्कवर करथिले आंसर करंतु समस्ते बी सी सब ओके आर आंसर हम सी ट्यूबरकुलोसिस रोबोट कोच कौन डिस्कवर करथिले ना ट्यूबरकुलोसिस रो इटियोलॉजिकल एजेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस कौन से सर्विस कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमरो प्रोवाइड करूची ना प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव और ऑल ऑफ द अबव कौन हो आंसर आंसर करंतु समस्त फटाफट एंड जो माने भी जॉइन माने सब्सक्राइब करी नाहंती से मानन कहूची कि से माने सब्सक्राइब करनियंतु आ गोटे जिंस मु आपण मानकु एबे कहि दउची जे हमर आ सहित ए जिंस तो चलची वीडियो आपनको डेली मिलिबो हैला आपरे हमर जो गोटे ओ ट्रिपल एस सी पई बाहर छि गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस रो बुक से बुक रो हमें किछि किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जोटा कि हमर मिशन हाई रो रहिछि ताको हमें गोटे सीरीज करके दे देबी आपनको सेटा रेकॉर्डेड वीडियो मिल जिवो जोथरे कि आपण 25 टा क्वेश्चन करके मिलिबो आपण ताको देखि परिबे हैला तो एटार 78 रो आंसर कोन हबो आंसर डी ऑल ऑफ द अबव ठीक अछि प्रिवेंटिव भी रहउची प्रोमोटिव भी रहउची क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव भी रहउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द ओजोन लेयर ब्लॉक्स फ्रॉम द सन कौन ब्लॉक करची सनलाइट यूवी रेडिएशन infrared radiation both UV and infrared radiation कौन हो आंसर 79 ओजोन लेयर कौन ये करची क्लास 3 क्लास 4 रू बोधे पड़ी के यूवी रेडिएशन हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा commonest cause of neonatal morbidity in India important question एबेठु लेखि दउची important for OSSSC Nursing Officer तो हमर कॉमनेस्ट कौन रहउची ना डायरियल डिजीज बर्थ इंजुरी कंजेनिटल एनोमलीज प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट कौन हो आंसर डी समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पीपीडी ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हमें कौन केमती दउचे इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस आईवी और आईएम कौन हो आंसर केते दउचे आ को रूट रे दउचे लेखंतु 81A 81A ठीक अछि केते दउचे केते एमएल केते एमएल दउचे लेखंतु फटाफट आईडी दउचे ठीक अछि 0.1 ml बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा chemical coagulant used to treat raw river water is कौन आमे यूज करूचे केमिकल कोआगुलेंट जोटा कि रिवर वाटर को ये करिया पई क्लोरीन पोटेशियम परमैंगनेट आलम सोडियम क्लोराइड कौन यूज होची आंसर करंतु फटाफट एठी देइची रॉ रिवर वाटर एटा को भी नोटिस करथुवे ओके 82A क्लोरीन हबो नाही हैला एटा हबो आलम यूज करा जाय जते बेले हमर रॉ रिवर वाटर ये करा होची सेते बेले हमर कोन यूज हुए ना आलम यूज हुए ठीक अछि
जो मानकर भी रॉन्ग होची जो क्वेश्चन रॉन्ग होची ताको टिके मार्क करके लिखि रखंतु तो जेमती परे ताको पढ़ी देबे थरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर को ईयर रे लॉन्च हेतिला 1953 1958 1970 2002 कौन होबो आंसर देखो माराथन क्लास रो डेमो जेहेतु मुझे कही दूसरी जे यहाँ मोर पूरा सब्जेक्ट वाइज फास्ट जीव सब्जेक्ट वाइज आम क्वेश्चन वन टाइम सारी सारा पर जो जी भी इंपोर्टाट क्वेश्चन रोचे आम तापर डिस्कसन करवा स्टार्ट कर जो मैंने भी माराथन क्लास जॉइन करना जॉइन करने चाहते 45% ऑफ अच्छी आपड़ जा चेकआउट करेंगे तो यार आंसर कौन हम 84C 84C दौरान 84A आसुची बी आसुची ओके मु कहि दउची नेशनल इराडिकेशन मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1958 बी हबो आंसर हला जो मानकर माने आंसर श्योर नहीं से माने प्लीज गुटे काम करंतु जोटा कि स्किप बोली लिखंतु बिकॉज आपण स्किप कले आपनकर मार्क कटिबनी बट आपण रॉन्ग आंसर देले आपनकर मार्क कटि जिवो हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्किप करबा गुटे हैबिट हुए ताको प्रैक्टिस करबा पई पड़े अगेन सेम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ड्रांकुलियासिस रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोन रहउछ कोंतु आंसर करंतु फटाफट कौन हो आंसर 84 प्रमिला साहू स्किप इज ए गुड ऑप्शन जे माने स्किप लिखुचंती सेटा भलो कथा जे मते आसुनी जदी म ताको स्किप करूची ओके यार आंसर हबो ऑप्शन सी हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन एंटी रैबीज वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय कहा द्वारा फर्स्ट सक्सेसफुल एंटी रैबीज वैक्सीन हमरो डिस्कवर हेतिला जैकबसन पास्चर हमरो हार्डगोविंद खुराना और जेम्स हरगोविंद खुराना कौन हो आंसर एलिना गुरु स्किप मत बहुत बढ़िया लगिला जे आपण माने गोटे जिंस शिखिले जोटा हमको आसुनी आमे ताको स्किप करबा स्टार्ट करूचे बिकॉज ए जिंसटा हमरो बहुत हेल्प करिवो ओके 84 देवकृष्ण लुइस पास्चर ओके तुम पास्चुरस लिखिଛ तो सेत मु कंफ्यूज हे गली ओके आंसर कौन हबो ना बी नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following vaccine is recently recommended for the adolescent girl ओके ए जिनसटा इंपोर्टेंट जे हमरो को वैक्सीन एबे रिसेंटली रेकमेंड करा है एडोलेसेंस गर्ल को टीटी रूबेला वैक्सीन पेंटा वैक्सीन एमएमआर वैक्सीन स्वर्णप्रभा स्किप बढ़िया ओके 85 गला 86 कोंतु रूबेला वैक्सीन आंसर ठीक अछि समस्तंकर मु गोटे जिंस कहबा पई चाहिबी एबे रिसेंटली जस्ट 6 मंथ भितरे गोटे जिंस हला जे हमरो को वैक्सीन चलतला हमर सर्वाइकल कैंसर पई को वैक्सीन दिया होची कहले गाडासिल सर्वाइकल कैंसर पई ठीक अछि बढ़िया गाडासिल हमरो दिया होतला हला जस्ट रिसेंटली एडोलेसेंट गर्ल मान को पई दिया होतला तार क्राइटेरिया कोन थला मु कहि दोछ फर्स्ट क्राइटेरिया जोटा कि
କୌଣସି ବି ଫିମେଲ ଯିଏ ଗାର୍ଡାସିଲ୍ ନବ ତାର ମେନ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନରେ ନଥିବ ଆଗରୁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ନଟ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ଯେ 13 to 14 ଇୟର ଭିତରେ ରହୁଥିବ ହେଲା, ଏଇଟା ରହୁଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। According to Central Birth and Death Registration Act 1969, the event of death should be registered in केते दिन भितरे डेथ रजिस्टर्ड हवा दरकार? 3 days, 7 days, 14 days, 21 days? HPV ठीक अच्छे। HPV गार्डासिल तार ना थिला। कौन होगा आंसर? 87D 21 days ठीक अच्छे आपनकर आंसर। हमर कौन होगा आंसर ना गोटे जितेबाला लोक मरी जाउचे हमरो 21 days भितरे रजिस्टर हवा दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person has been immunized with TT 8 years ago. Now he is injured in an accident. Then there is no need to administer TT. Give 2 doses of TT at the interval of 1 month. Administer single dose of TT. Double dose of TT should be given immediately. First thing आमे कौन करिबा जे डबल डोज तो केबे भी दिया जाएनी, इमिडिएटली केबे भी डबल डोज दिया जाएनी। तो हमर एठी एलिमिनेशन गोटे देखंतु क्वेश्चन कला बेले आपनकर गोटे मेथड होची एलिमिनेशन मोड। तो हमर डबल डोज दिया जाएनी, आको काटे देले हैला। जेहेतु एठी हमर केते वर्ष होई जाईची 8 ईयर एगो नैथिला, तो नो एडमिनिस्टर ऑफ टीटी तो हबो नाही हैला। तो बाकी भी दुईटा कोडा बंचिला, गिव 2 डोज ऑफ टीटी 1 मंथ इंटरवल ले हमरो टीटी को केस रे दिया होची, ओनली दिया जीवो हमरो प्रेग्नेंट लेडी केस रे हमरो दोचे। तो हमरो एठी आंसर कोन हे गला ना एडमिनिस्टर सिंगल डोज ऑफ टीटी, सी हबो आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सारे गला की ना ठीक है। Montauk test is considered as positive when केतेबेले पॉजिटिव बोली ये करा होची। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ एक्सीडिंग 10 mm, 10 mm रु अधिका होची। डायमीटर ऑफ इंड्यूरेशन एंड एरिथमिया मोर देन 10 mm, लेस देन 5 mm गुटे रहउची, आ गुटे होची 6 to 9 mm डायमीटर। कोटा हबो आंसर? पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर देवकृष्ण 10 सेंटीमीटर नुहे 10 सेंटीमीटर कोठी तुम स्केल पके कि देखो 10 सेंटीमीटर कोच माने कितने होची 10 mm हबो। ओके आंसर कौन हबो हमरो ना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, दे हमरो जो एक्सपायर्ड एयर रहउची एक्सपायर करूचे हमें, तो तार कंसंट्रेशन केते रहउची? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पचारची से एठी हला। गोटे सेकेंड, हां ऑक्सीजन कंसंट्रेशन केते रहउची? 0, 16%, 21%, 4%। कौन हबो आंसर?
ଭଏସ୍ ଆସୁନି ମୁଁ ଦେଖି ନେଲି ଯେ ମାଇକ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏବେ ଆସୁଥିବ ସାର୍ ଭଏସ୍? ୟେସ୍ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମାଇକ୍ଟା ଟିକେ ସେଟ୍ କରିଦିଏ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ 25ରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଶୋ କରିବ ଆପରେ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସପୋଜ୍ ଆମେ CHN ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ CHNର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଲାଇଭ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ବଟ୍ ସେଟାରେ ଆନ୍ସର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବନି ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି ଲାଇଭ୍ରେ। ବଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବି ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ତାକୁ ସେମ୍ ଡେରେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ 500 ଦିଏ 1000 ଦିଏ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା 500ରୁ 1000 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲସେ ରିଡ଼ିଂ କରିବେ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର କହିବାର ଥିଲା, ବାକି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଫ୍ରି କେବେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବି ବିକଜ୍ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ନୋଟିସ୍ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିସାରିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଲା? ନା May 8, 1980 ହେଉଛି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ। ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ହେଲା? ନା ଏପ୍ରିଲ 1977 ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ବି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। Tetanus is a bacterial disease, viral disease, fungal disease, protozoal disease. Bacterial disease. All stage of races are seen in. Okay, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। जो क्वेश्चन गोटे अधे रिपीट हो जाଉଛି କିମ୍ବା ଇଜି क्वेश्चन ଅତି ଇଜି क्वेश्चन ରହି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦଉଛି ହେଲା। 93 କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ? 92 ଗଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ डिजीज, 93 କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? सी चिकन पॉक्स, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Profuse watery diarrhea followed by vomiting is the manifestation of measles, polio, cholera, hepatitis। को केस रे देखा होची? 94 सी कोलेरा, ठीक अच्छे आपनकर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आपनको मु एठी जो देखौची सब नॉर्मल क्वेश्चन जो देखाउची आ परे हमर कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इंक्यूबेशन पीरियड ए सब जिंस भी डिस्कशन हबो हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टॉर्च रे कोन इंक्लूड होची, कहा को छाडी दोचे आमे? अपडेटेड गाइडलाइन हिसाब रे बचारिबे। अपडेटेड गाइडलाइन कोन एबे टॉर्च अछि कि कोन अछि एबे मते सेटा कहंतु। हां, परफ्यूज डायरिया रे कोलेरा हला ठीक अछि। नेक्स्ट। डी टिटनस ठीक अछि। ओके, मते कहंतु अपडेटेड गाइडलाइन कोन? न्यू अपडेट कोन अछि? अरे मोर हैंडराइटिंग तो भगवान। STORCH
सुस्मिता ओझा SCORCH ना STORCH आंसर करंतु समस्ते ST ना SC S रे रहिला S रे कोन रहउची सिफिलिस T रे रहउची टॉक्सोप्लाज्मोसिस ओके 95D तो हाँ आंसर हला ST गला तापरे O रे कोन रहउची अदर इन्फेक्शन देन R रे कोन रहउची रुबेला C रे कोन रहउची C आउ H कमेंट करंतु C रो कोन रहला काई कहार आसुनी कमेंट काई आसुनी कमेंट पूरा धरे गला साइटोमेगालो भाइरस H रे हार्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस ठीक अछि कोन 100 जन रो हम खसी खसी के 44 जन को फसी आसलानी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द एटा दरकार नै 2019 रा हम थीम जान के भी कोन करिया नेक्स्ट the denominator used to calculate crude bath rate कौन denominator यूज करा होची crude bath rate को ये करिया पय live bath in that year mid year population of that year population age 18 year or above school going population कौन होबे आंसर crude bath rate रा हमर फार्मूला कौन रहउची समस्त लिखंतु टिके प्रमेय सब मोर टिके नेटवर्क इशू होची सेति लागि स्किप हे होची ओके 97 बी हबो आंसर गोटे सेकंड पारे गला 97 कौन है हमर आंसर ना मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर ओके बी समस्त आंसर ठीक अछि चार्ट एते स्लो कौन पई है छी सुई पड़ले ना कोन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा oral vaccine is used to prevent oral vaccine हमर कोन को प्रिवेंट करिया को यूज करा होची मम्स ट्यूबरकुलोसिस पोलियो मेजल्स फटाफट इजी क्वेश्चन अछि इजी क्वेश्चन उडा डिस्कस करछि तापर जीबी 254 क्वेश्चन अछि पोलियो ठीक अछि सी हैला आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फटाफट क्रॉस करिके जाउ छला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग इज कौन रोचे हमर मोस्ट कॉमन टाइप नाइन 99 रे कौन हो आंसर बुबोनिक ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which is the best method to prevent nosocomial infection nosocomial infection को prevent करिया पे हमर बेस्ट मेथड कोन रहउची हैंड वाशिंग यूज ऑफ पीपी आइसोलेशन यूज ऑफ स्टेराइल आर्टिकल
कौन होची आंसर? ओके 100 क्वेश्चन टच करिले तार आंसर कौन हम? हैंड वाशिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन को एवॉइड करने पे आमर सब बेस्ट मेथड कौटा रोची ना हैंड वाशिंग रोची। नेक्स्ट क्वेश्चन according to IMNCI guideline which is the most important feature for diagnosis of severe pneumonia severe pneumonia को diagnosis करिया पई कोन होची most important feature? fast breathing, chest indrawing, nasal flowing, inability to feed। बोर लागुन तो कंटिन्यू करिवा तो मते चार्ट रे लिखंतु फास्ट मोर किछि असुविधा नै कंटिन्यू करिवारे जदि आपण माने राजी अछंती मु कंटिन्यू करिवि बिकॉज क्लास जेतेबेले हमर ये रे चलिबो ऐप रे ए टाइप रो चलियो डिनर डिनर आ घंटे परे कर दबा जदि आपण माने कहिबे ताने कंटिन्यू करिवा भाई गोटे दिन गोटे घंटा लेट रे खाइले किछि असुविधा होबनी गोटे रियलिटी कहूची काली मु आपण मानक पई सुई नाही काली राती 4टा बेले सुईची सब जिंस रेडी करिवा चक्कर रे एबे भी मते निद आसलानी बट मु आकु कंटिन्यू करिवि जते जाय आपण माने मना करनांती सेते जाय कंटिन्यू होबो। ओके आउ वन आवर पर खाइबा ठीक अछि 10टा पर्यंत करिवा 10टा परे क्लोज करिवा। ओके ओके हमर आंसर कोन हला according to IMNCI guideline which is the most important feature for diagnosis of severe pneumonia को diagnosis करिया पे कोन हबो आंसर आंसर करंतु मैं आंसर देखि नै 101 रो आंसर बी बी ठीक अछि चेस्ट इंड्राइंग हबो हमर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Baboes are enlarged tender lymph nodes, enlarged bones, enlarged tender articles, tender muscle। कौन हबो आंसर? आंसर करंतु मुटे पानी पी दिए जहार चाहा कॉफी क्लास बेले दरकार से नहीं कि बसंतु हला ब्रेक मिलिवनी जदि कहार ब्रेक दरकार मझिरे उठी जिवे बिकॉज मोर ब्रेक दरकार हेले मु आपन कहि कि जाइते पड़ियो किंतु आपनकर ब्रेक दरकार हेले आपन कहबार नै आंसर कोन हबो ए ठीक अछि एनलार्ज हमर एटा कोन हला ना एनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा MDT is used for the treatment of tuberculosis, leprosy, diphtheria और malaria। कौन हो आंसर जल्दी जल्दी करंतु आरो अधिक क्वेश्चन करिया MDT कौन ପାଇଁ यूज होची ना बी लेप्रोसी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन the first person becoming sick in an epidemic is called primary case, secondary case, contact case, index case। कौन हो आंसर जे फास्ट केस जे हमरो बाहरुची सिक इन एन एपिडेमिक इज कौन हबो आंसर प्राइमरी केस बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटा मु आपन कहि देइतली मल्टीवेस्युलर केस रे हमरो आंसर कोन हबो ना ए हबो ठीक अछि आको डिस्कस करिवानी बिकॉज ऑलरेडी मु आपको कहि सारची। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रब टाइपस इज ट्रांसमिटेड बाय स्क्रब टाइपस का द्वारा ट्रांसमिट होची माइट रेड टिक लाउस कौन हबो आंसर
106 कौन हम आंसर 106 ए ठीक अछि माइट हम आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेग इंक्लूड क्लिनिकल फीचर कौन इंक्लूड करूची फीवर चिल्स हेडेक पेनफुल lymphadenopathy enlarged tendon lymph node all of the above कौन हम आंसर डी ओके ठीक अछि ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the new disease identified to be transmitted through the bite of an infect Aedes mosquito Aedes mosquito द्वारा हमर कौन होला आंसर करंतु 108 आंसर करंतु जिका ठीक अछि 108 आंसर सी एटी देखो गोटे जिंस से देछि न्यू डिजीज हैला जेते बेले आपनकर न्यू डिजीज इन्फेक्टेड होछि का द्वारा ना एडिस मस्किटो द्वारा तार हमर आंसर कोन हबो जिका वायरस डिजीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा WHO recommended which of the following for management of diarrhea diarrhea ପାଇଁ ଆମର କଣ WHO recommend କରିଛି electrolyte ORS plus zinc rice water sugar salted water କଣ ହବ आंसर आंसर करंतु बी ठीक अछि ORS plus zinc होची हमरो WHO recommend करिछि नेक्स्ट क्वेश्चन blood sample from a patient with malaria should be collected at the peak of fever at after taking meal when fever is just started when temperature is normal को टाइम रे हमरो blood sample नबा कथा ए ठीक अछि जेते बेले हमरो पीक फीवर थिबो सेते बेले हमरो कोन करा जिवो ना मलेरिया रो ब्लड सैंपल निया जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्यूबे आसी गला एबे ठु मजा आसीओ incubation period of leprosy is about मु सेते वेट करतली incubation period रो क्वेश्चन केते बेला आसीओ 3 to 5 year 6 to 10 year 45 to 180 days 2 to 6 days sorry 3 to 5 years ठीक अछि 6 to 10 days 45 to 180 2 to 6 days कौन हो आंसर 111 है बढ़िया इंक्यूबेशन पीरियड रो क्वेश्चन को आंसर को पूरा घुसी दियंतु क्वेश्चन निहाती पाइबे जो शिफ्ट रे हेले गोटे आसीबो ओके हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज को ये रे एक्सप्रेस करा होची कोंतु 112 सी बी स्किप ओके mg per liter ओके mg per liter हबो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन the center of is the center of community health center
ओके ये मिस्टेक रे जो डेस टा छाड़ दे जाइए डेस इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पीएससी फैमिली स्कूल पब्लिक गैदरिंग ओके 113 पीएससी ठीक अच्छे आंसर ए हम 114 को जीवा अच्छा मते जो माने भी हमरो मैराथन क्लास रो छुआ समस्त एटी प्रायतः अछंती जो माने भी यूट्यूब रे अछंती मते गोटे जिंस सजेस्ट करंतु जे क्वेश्चन एमती कंटिन्यू करबा जे हमर एई टाइप रो क्वेश्चन दरकार कि आपण आउ को टाइप रो इच्छा करछंती मते टिके सेही विषय रे कहंतु हला कि मु आ संगरे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को ऐड कर देबी एना देखंतु ओ ट्रिपल एस सी तार बेसिक जो दुई थर एग्जाम ହେଇଛି से भितर फास्ट 2021 रे से टोटली फोकस करथिला जे वन लाइनर टाइप रो क्वेश्चन 2023 रे से मिक्स करथिला जे किछि हमर जो प्रायोरिटी बेस भी थिला बट वन लाइनर भी थिला तो मु सेत पय चाहूची जे प्रायोरिटी बेसिस भी ऐड करबा और ता सहित जो वन लाइनर क्वेश्चन भी रहउची ताकू भी ये करबा देखंतु कम्युनिटी रे प्रायोरिटी बेस सेमती बहुत कम टाइप रो क्वेश्चन आसे बट जेतबेले आमे जिबा एमएसएन फंडामेंटल से टाइम रे मु किछि प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन को भी ऐड करिवि हला सर मोर प्रायोरिटी कंपैरिजन रे वन लाइनर रे क्वेश्चन रे देखंतु आपन को मोडे जिंस कहूची सिंपली 2023 रो क्वेश्चन को देखि छुआ माने कोन करचंती जे प्रायोरिटी बेसिस रे तो से माने पढ़ी देले वन लाइनर को समस्त नेग्लेक्ट करचंती इवन आपन प्रायोरिटी बेस रे क्वेश्चन मु आपन को देबी आपन बहुत भलो मार्क रखिबे किंतु वन लाइनर एई टाइप रो क्वेश्चन को देबी आपन कम मार्क रखि पारंती तो सेत पय कहूची आपन देखो कम्युनिटी रे आपन को एई टाइप रो ही क्वेश्चन मिलिबो बट आपण जेतेबेले एमएसएन को जिबे फंडामेंटल अदर सब्जेक्ट लाइक पेडियाट्रिक हो कि हमर ओबीजी हो से टाइप रे आपण को एडेड मिलिबो बिकॉज़ सेठी दुई टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओके ए क्वेश्चन ला करा है ना 114 all of the following are characteristic of rashes in chicken pox except एटी एक्सेप्ट मागिछि वन लाइनर पई बहुत मन रखिबार अछि सिनेरियो रे कांसेप्ट दरकार वन लाइनर आपन को किछि नै घुसिबार अछि सेठी आपन को किछि कांसेप्ट दरकार नै आपन सेत पई कांसेप्ट पई हेले जेतबेले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आसु कम्युनिटी रे को टाइप रो सिनेरियो आसीबो सिनेरियो तो अलगा सब्जेक्ट रे बेसी आसीबो ना जेहेतु मैं एठी लाइव रे आपन को दउची एटा तो मु कम आमे जेहेतु कम्युनिटी करछे सेत पई एम्ति वन लाइनर आछ बट वंस वी शिफ्ट फंडामेंटल वगैरह तो आसीबो मिक्स सिके आसीबो ओके 114 कोन हला आंसर डी डी समस्तଙ୍କର डी ठीक अछि डी अछि आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मॉन्टॉक टेस्ट इज एन एटा करिचे नेक्स्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपाटाइटिस बी वैक्सीन हेपाटाइटिस बी को रूट रे दिया होछि 116 कहंतु 115 छाडंतु ऑलरेडी करिचे 116 को आसंतु 116 सी ठीक अछि हमरो हेवी इंजेक्शन को टाइप रो दिया होछि ना आईएम दिया होछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा dash is a disease that can cause due to infected milk जोगु कोन हमरो डिजीज होछि एंथ्राक्स गैस्ट्राइटिस रिमाटिक फीवर टॉन्सिलाइटिस 117 ए आछी समस्तଙ୍କର आंसर ठीक अछि एंथ्राक्स होछि देखंतु मु आपण माननकु जदी मोर कोर्स को अट्रैक्ट करबार थिला तो मु आराम से फंडामेंटल और एमएसएन और सपोज आपणकर नियंतु
पेडियाट्रिक यही क्वेश्चन को चूज कर पारथांती बिकॉज सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत छुआंकर मिस्टेक हुए यूट्यूब रे प्रमोट करी माने छुआ सांगे सांगे कोर्स बाय करिवे बट सबुठु छुआ जोटा को मिस करंती जेटा कि हला कम्युनिटी रे बहुत सारा क्वेश्चन ठास्क मारिवा चक्कर रे बाजी जाए नेगेटिव मार्किंग सेत पे मु फर्स्ट प्रायोरिटी देली कम्युनिटी को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एडा हमर एंथ्राक्स हला नेम द फिश यूज्ड टू ईट लार्वा of mosquito under malaria control program रे कोन ये होची starfish tuna salmon gambusia 118 डी ठीक अछि गाम्बुसिया फिश यूज करा होची नेक्स्ट डिप्थेरिया इज ए बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोअल फंगल को डिजीज डिप्थेरिया 119 आंसर करंतु डिप्थेरिया कोन होची हमरो को डिजीज 119 ए स्मिता सेठी स्किप अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लेप्रोसी मे बी ट्रांसमिटेड बाय लेप्रोसी कहा द्वारा ट्रांसमिटेड होची ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट होमाइट ऑल 120 डी पल्लवी भूल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होची हमरो ट्रांसमिटेड होची ड्रॉपलेट हबो आंसर next which one of the following is the most important component or equipment of cold chain in India vaccine carrier ILR WIC deep freezer could have answer 121 बी ILR आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन टे फास्ट फॉरवर्ड करिवा लेप्रोसी containing 2 to 5 lesion is known as 2 ରୁ 5 थिले कोन हबो पाउसी बेसिलरी सिंगल लेशन लेप्रोसी पाउसी बेसिलरी लेप्रोसी मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी ऑल फटाफट आंसर करंतु ऑलरेडी थरे कहि कि जाईची प्रमिला साहू स्किप केमती ऑलरेडी मु एटा डिस्कस करि सच्ची बी ठीक अछि पाउसी बेसिलरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लेप्रोमाइन टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोसिस आपण माने भाबुथुवे जे मु टीबी आ लेप्रोसी पई एते काहे कि फोकस दे कि क्वेश्चन करिछि बिकॉज जेहेतु मु भी अछि सेक्टर रे तो मु जानि छि एबे टीबी आ लेप्रोसी ऊपर बहुत सारा फोकस अछि बाय चांस के जदी टीचर किबा के लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम रो किबा टीबी कंट्रोल प्रोग्राम रो थिबे से माने जदी क्वेश्चन करूथुवे तो मोस्ट क्वेश्चन कहीं ना आपण देखिथिबे थरे नॉर्सेट सीआरई रे एमती हेतला जे खाली टीबी और लेप्रोसी रो बहुत सारा क्वेश्चन आ जायतला तो सेत पई मु ए जिंस को फोकस करछि बिकॉज़ एबे गवर्नमेंट रो ए जिंस ऊपर फोकस अछि ओके एटार आंसर कोन हला ना लेप्रोसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सिक टेस्ट इज एन इंट्राडर्मल टेस्ट इंट्रामस्कुलर टेस्ट आईवी टेस्ट सबक्यूटेनियस टेस्ट कौन हो आंसर 124 ए बी सब आछो
124 होचे आमर इंट्राडर्माल टेस्ट हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, fever, chest pain, hemoptysis are the symptoms of diphtheria, tuberculosis, polio, renal tumor। कोटार 125 बी 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 ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, incubation period of tetanus is about। incubation period tetanus incubation period केते दिन 3 to 5 year, 6 to 10 days, 45 to 180 days, 2 to 6 days। incubation period रो क्वेश्चन देखले मु तो खुशी जाए। 126 बी समस्तଙ୍କର आंसर ठीक अछि। 6 to 10 days होची हमर incubation period को केस रे ना टिटनेस केस रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय ऑलरेडी कहि देछि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइक होची एटार आंसर, एटा ये करिया दरकार नै। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर ऑफ whooping cough includes। whooping cough रो कंट्रोल मेजर कोन इंक्लूड करूची, convulsion, disinfection of discharge, DPT vaccine, all of the above। 128 आंसर करंतु। whooping cough पई कोन दिया होची, 128 सी समस्तଙ୍କର आंसर ठीक अछि। DPT वैक्सीन हमरो दिया होची whooping cough पई। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर इज कॉज्ड बाय। येलो फीवर कहा द्वारा होची, फ्लाविवायरस फिब्रिकस, यर्सेनिया फेस्टिस, कॉक्सिएला ब्रुनेटी, लेशमेनिया। कौन हो आंसर, येलो फीवर कहा द्वारा होची 129 कौन हो आंसर 129 ए जो माने दउचंती तांकर आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए एसटीडी, गोनोरिया, चांक्रोइड, सिफिलिस, डिप्थेरिया कोटा। कौन हो आंसर, डिप्थेरिया हबो हमर आंसर। डी डी जो माने दउचंती आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, pasteurization is the procedure used to purify। pasteurization कोटा को हम प्यूरिफाई करिया पई यूज करा होची, वाटर, वैक्सीन, मिल्क, मीट। कौन हो आंसर, सी 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 ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किए करोछ, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 132 सी ठीक अछि। समस्तଙ୍କର आंसर कार्बन डाइऑक्साइड करोची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय। कोंतु का द्वारा ट्रांसमिट होची, टेस्ट फ्लाई, फ्लेबोटोमाइन्स, सैंडफ्लाई, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, कॉक्सिएला ब्रुनेटी। का द्वारा होची, ए सी कोटार आंसर दउजंती 133 रो आंसर करंतु। स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय कहा द्वारा होची,
133 ର आंसर ए प्रमिला साहू 133 सी भूल 133 ए हबो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा maternal mortality is expressed as term of maternal mortality केमिति हमरो एक्सप्रेस होउची पर 1000 पर 10000 पर 1 लाख पर 10 लाख कौन हो आंसर 134 सी ठीक अछि हमरो मैटरनल मोर्टालिटी केमिति ये होची ना पर 1 लाख रे हमरो कैलकुलेट होउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा राइस वाटर स्टूल को केस रे देखा होची टाइफॉइड कॉलेरा डिसेंट्री डायरिया राइस वाटर स्टूल ओके राइस वाटर स्टूल हमरो को केस रे देखा होची कोंतु बी 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 स्मिता सेठी 134 135 रो आंसर करंतु 135 रो आंसर 135 बी राइस वाटर स्टूल हमरो कोन होची ना कॉलेरा केस रे देखा होची टाइफॉइड केस रे कोन देखा होची ना पी सूप डिसेंट्री रे ब्लड स्टूल मिक्स्ड विथ ब्लड स्टूल का सहित मिक्स हे किथिबो ना म्यूकस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ट्रीटमेंट गिवन ड्यूरिंग इंटेंसिव फेज ऑफ कैटेगरी 1 ऑफ डॉट्स कैटेगरी 1 ऑफ डॉट्स रे कोन दे होची 2HRZD3 2HRZDS3 plus 1ZR sorry HRZD3 2HRZ3 4HR3 कौन होगा आंसर 136 रो आंसर करंतु हमर कोन होचे आंसर ना बी कोटार लिखुछ रे 136 की 135 135 तो बी गला 136 रो आंसर करंतु गुरु कृष्ण को बोधे भोक लगी से पळैचंती ओके 136 रो आंसर हबो 2HRZE3 हैला बिकॉज एटी कोन पचाची कैटेगरी 1 होची डॉट्स रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंट्रोल मेजर ऑफ टिटेनस इंक्लूड्स एक्सेप्ट एटी एक्सेप्ट पचारीची isolation of patient disinfection of discharge DPT vaccine BCG vaccine कौन होबो आंसर कंट्रोल मेजर कोटा ये करूची 137 डी समस्तंकर आंसर डी बढ़िया BCG vaccine कंट्रोल मेजर ऑफ टिटेनस इंक्लूड एक्सेप्ट पचारीची हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोल्ड चेन छाड़ो कोल्ड चेन गला हाइड्रोफोबिया मीन्स हाइड्रोफोबिया रो माने कोन फियर ऑफ वाटर फियर ऑफ एयर फियर ऑफ हाइट फियर ऑफ पेन सबुडार आंसर दरकार मोर फियर ऑफ वाटर को कोन कहा जाए फियर ऑफ एयर को कोन कहा जाए फियर ऑफ हाइट को कोन कहा जाए फियर ऑफ पेन को कोन कहा जाए सबुडा लेखंत फियर ऑफ वाटर को हमें कोन कहले हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ एयर को कोन कहउचे हमें लेखंतु
fear of height, acrophobia. Okay, fear of air कहंतु, fear of air होची aerophobia. Okay, fear of height होची acrophobia. fear of pain होची algophobia. ओके, तो ये आमर राइट आंसर कौन है ना ए. नेक्स्ट क्वेश्चन एटा करा है इन द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजिल्स. मिजिल्स रो आमर मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कोटा. कहतु आंसर कहतु आंसर कहतु मुझे साइंस पानी पी दे तंटी कथा करला मोर. 141 ए 141 ए आंसर ठीक अच्छे है. नेक्स्ट क्वेश्चन करंतु. Malaria transmission occurred by vector, food and water, airborne आउ फुमाइट. कौन हम आंसर ए ठीक अच्छे. आमर malaria vector द्वारा ट्रांसमिटेड होउची. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. ह्यूमरल इम्यूनिटी derived from humoral immunity कोठु derive होउची. bone marrow derived lymphocyte, thymus derived lymphocyte, RBC platelet. कौन हम आंसर शहे 43 बी आसुची ए आसुची आंसर. ओके, शुभश्री बारिक 143 बी. एटा आमर आंसर हम कौन ना बोन मैरो डिराइव लिम्फोसाइट. 143 आमर ए हम आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिलिटी इन इंडिया. कॉमनेस्ट कॉज कौन रोची. एनीमिया, हेमोरेज, एबॉर्शन, सेप्सिस. कॉमनेस्ट कॉज कौन रोची मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया रे. मैटरनल मोर्बिडिटी जेतबेले आपणकर पचारिछि सेतबेले आपणकर आंसर कोन हबो. समस्तंकर आंसर आछि बी. समस्तंकर आंसर आछि बी. एठी देखंतो आपणकर जेतबेले मोर्टालिटी आछि सेतबेले आपणकर आंसर हबो हेमोरेज हैला. जेतबेले मोर्बिडिटी आछि सेतबेले आपणकर आंसर हबो एनीमिया. मोर्बिडिटी आसिले ए हबो आंसर हैला. एनीमिया हबो हमर एटार आंसर. मोर्टालिटी हेले हेमोरेज, मोर्बिडिटी हेले एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. रैशेस ऑफ चिकन पॉक्स फास्ट अपियर ऑन कोठी फास्ट अपियर करछि. ट्रंक, फेस, आर्म, लेग. कोठी फास्ट अपियर होछि 145 बी ए आरती सिंह 145 बी फेस रे. अरे भाई रैशेस ऑफ चिकन पॉक्स फास्ट कोठी अपियर हबो. ट्रंक रे फास्ट अपियर हुए. मधुमिता पात्र फास्ट अपियर हुए ट्रंक रे हैला.
जो माने ए आंसर देइचंती सेमानकर आंसर पूरा ठीक अछि हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। फ्लैसिड पैरालिसिस, fever, sore throat, constipation are the manifestation of diphtheria, tuberculosis, polio, sorry, renal tumor. कोटा हला आंसर फ्लैसिड पैरालिसिस 146 आंसर करंतु 146 सी समस्तंकर सी आसुची आंसर बी और ए किछि लेखुचंती फ्लैसिड पैरालिसिस फीवर सोर थ्रोट कॉन्स्टिपेशन उडा कोडार हमर आसुची आंसर ना पोलियो केस रे देखा होची हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा इज कोलेरा रो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोन रहउची fecal contaminated water contaminated food contaminated hand all of the above 147 डी समस्तंकर डी ऑप्शन आछे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। राइस वाटर स्टूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ राइस वाटर स्टूल कोथरे देखा होची हमरो कोलेरा एडा हमें ऑलरेडी करिचे ताको हमें स्किप करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट मम्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट कौन डिजीज को प्रिवेंट करिवो हाइड्रोसिल ऑर्काइटिस वेरिसेला अनडिसेंडेड टेस्टिस कौन हो आंसर 149 बी बढ़िया आंसर आछे रे आज तो मते रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स कौन रहउची 150 ए देइचंती के बबीना मिश्र भूल अच्छी 150 ए होबनी 150 ए जो मन दोचंती बी जो मन दोचंती भूल अच्छी एटा हबो सी हबो आंसर हमर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स कौन हबो मिक्सो वायरस। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया रो इंक्यूबेशन पीरियड केते रहउची आंसर करंतो फटाफट समझते। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया 3 to 5 year 6 to 10 year 45 to 180 days 2 to 6 days जदि डिप्थेरिया होची हमरो इंक्यूबेशन पीरियड केते दिन रहइबो 151 बी भूल 6 to 10 days होबनी 3 to 5 year होबनी 45 to 180 days भी होबनी एटारो आंसर कोन रहइबो ना 2 to 6 days हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एम्यूबाइसिस इज ए कॉमन इन्फेक्शन ऑफ gastrointestinal tract respiratory tract circulatory system urinary tract कोटा रोज 152 ए ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एड्स रे ए स्टैंड फॉर एड्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज फंगल डिजीज प्रोटोजोअल डिजीज एटा समस्त कहे देबे हला। नेक्स्ट आसार हाँ आसला आसार फुल फॉर्म कोन accredited social health worker accredited social health activist associated social health activist social health provider कोटा होची आंसर हमरो जो माने डाउनलोड करनांती ऐप को फटाफट डाउनलोड करनियंतु हला
आ जो माने हमर एई टाइप रो क्वेश्चन सहित प्रैक्टिस करिया पई चाहउचंती ता सहित मु जो क्वेश्चन देबी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिकि आपण OSSSC नर्सिंग ऑफिसर को जदि क्रैक करिया पई चाहउचंती आपण ड्रीम अचीवर ऐप को डाउनलोड करंतु एंड मैराथन ऐप को परचेस करिकि आपण ए कर परिबे। ओके आंसर कोन हला 154 बी डी देइचंती एलना गुरु भूल अछि एटार आंसर हबो 154 बी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हला। नेक्स्ट क्वेश्चन commonest cause of infant mortality rate IMR in India important question infant mortality rate कोथि पई होची ना प्रीमेच्योरिटी हबो हमरो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज कोटा हमरो नेचुरल मेथड होची कैलेंडर मेथड कंडोम्स आईयूसीडी आउ ओरल कंट्रासेप्टिव कोन होची आंसर नेचुरल मेथड कोटा ए समस्तंकर ए आस्टु आंसर कैलेंडर मेथड ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन Leishmaniasis is a group of bacterial disease, viral disease, protozoal disease, fungal disease. कौन होगा आंसर Leishmaniasis को ग्रुप रो जाउची बैक्टीरियल ना वायरल ना प्रोटोजोअल ना फंगल कौन होबो 157 फटाफट आंसर करंतु समस्ते एलिना गुरु भूल पुणी अच्छा नाथ फुल मिश्र बबिना ठीक अछि प्रोटोजोअल डिजीज होबो हमरो एटा आंसर लेशमेनियासिस को ग्रुप रे ना प्रोटोजोअल ग्रुप रो जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन who found the link between cholera and contaminated water Louis Pasteur Ronald Ross John Shaw Edward Jenner 158 कौन होबो 158 सी ठीक अछि समस्तंकर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा lymphatic filariasis is transmitted by the biting of कहा द्वारा होची डॉग रेट मस्किटो हाउस फ्लाई फाइलेरिया कहा द्वारा होची 159 सी समस्तंकर आंसर ठीक आछी मस्किटो द्वारा होची। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन केमती दिया होचो आईएम रूट रे दिया होचो आईवी रूट रे दिया होची सबक्यूट दिया होची ओरल रे दिया होची स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को रूट रे दिया जाए आईएम एलिना गुरु फिर पुणी बी आईवी रूट भूल 160 डी प्रियंका भूल ओरल रे दिया जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया होची हमरो आईएम दिया होची हला स्ट्रेप्टोमाइसिन हमरो दिया होची को टाइप रे ना आईएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा hydrophobia intolerance to noise and bright light slight fever and headache aerophobia are the symptoms of कोटार symptoms एटा जे भूल कहितो माड खाइबो को केस रे देखा जाए 161 डी समस्तंकर आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in following which disease has been completely eradicated from the world को डिजीज टा completely eradicate हे जाइछ
पोलियो, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, HIV। आंसर करंतु समस्ते। समस्तंकर आंसर आसुची सी। सी आंसर ठीक अछि। स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इराडिकेट हो जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। Which is the important point in taking care of a patient with communicable disease? Isolation, immunization, hospitalization, care of used utensil and article. Which is the important point in taking care of patient with communicable disease? Answer isolation, 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 isolation। जहाँ जो मान देछन समस्तंकर isolation आंसर ठीक अछि। ओके नेक्स्ट। गोटे मिनिट। Coplic spot, which are the characteristic feature of measles, are seen in eruptive stage, convulsant stage, prodromal stage, proconvulsant stage। कौन होगा आंसर? 164C। समस्तंकर सी आसुची आंसर ठीक अछि। प्रोडर्मल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The category of TB patient in which streptomycin is given। streptomycin को केस रे दिया होची कैटेगरी 1 2 3 और ऑल कैटेगरी रे streptomycin दिया जाए। को कैटेगरी ऑफ टीबी पेशेंट रे हमें streptomycin देथाउ। आंसर करंतु समस्ते। 165 सी समस्ते होचंती। स्ट्रेप्टोमाइसिन को केस रे दिया जाए। रिफाम्पिसिन के लिखतले 165 कौन हो आंसर? कैटेगरी 2 रे दिया जाए हमरो स्ट्रेप्टोमाइसिन हला। सी रे नुहे, सी हबनी एठी आंसर बी हबो आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट। The last case of smallpox was reported in the world in the year of को year रे देखा हैतला smallpox last 1978 1980 1977 1982। लास्ट केस केबे देखा हैतला? सबु सी मारिबारे लागि चंती। ओके मु आपनको एठी गोटे आंसर कहूची। आपणकर जेतेबेले इन केस ऑफ एठी देखंतु गोटे जिंस देछि से वर्ल्ड लेखिछि इंडिया लेखि नाही। आपणकर लास्ट केस देखा हैतला इंडिया रे होची 1977 आ वर्ल्ड रे केबे हैतला ना 1980। एठी वर्ल्ड जेतेबेले आसीबो सेतेबेले 1980 हबो आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तमर एटार आंसर कोन हैला ना 1980। फुल फॉर्म ऑफ MTC मैक्सिमम ट्रीटमेंट कॉर्नर, malformation treatment center, malnutrition treatment center, none of the above। MTC रो फुल फॉर्म कोन? समस्तंकर आंसर
ए 167 बी किए लिखुଛି ମାଲ ଫର୍ମେସନ୍ କୋଉଠି ହେଲା ରେ ଭାଇ? ମାଲ ଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ। ଦେବକୃଷ୍ଣ ଖାଇବା ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲ? 15-20 ମିନିଟ୍ ଦେବକୃଷ୍ଣ ହଟି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମତେ ସାର୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଡିନର କରିକି ଆସେ ତାପରେ ପାଠ ପଢା ଦେଖାଯିବ। ओके 167 सी हब हमर आंसर माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर। नेक्स्ट, the most important skill to be processed by a nurse administer working in a community setup। आज्ञा सर जानी थी मुझे तो क्वेश्चन करथली तमे आंसर कर नथलो तमे। ओके कौन हबो 168 रे आंसर? बी कम्युनिकेशन। समस्त आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of safe and wholesome water? कोटा characteristic नुहे? free from chemical, free from pathogen, rich in iron content, pleasant to taste। कोटा होची not a characteristic of safe and wholesome water रो कोटा characteristic नुहे? ओके 1288 सब्सक्राइबर पहुंचे 1300 पहुंचंतु। लाइक कहीं रे समस्त लाइक करो एटलिस्ट। रिच इन आयरन कंटेंट ठीक अच्छे सी हम आंसर आमर। देवकृष्ण गोटे सीट लिखि दियो। बस एग्जाम जिते बड़े दब एग्जाम रे 2 मिनिट नौचे हला कहीं कंटिन्यूअसली आम 3 आवर पाखापाखि है पाठ पढ़ला तो जस्ट गोटे मिनिट मुझे आपको गोटे किसी टिप्स दौचु। जिते बड़े एग्जाम रे आंसर करेंगे है काम रहिबे। जो पेनिकनेस आपण मानक भितर अच्छी जे आम कंप्यूटर रे टेस्ट दवा केमती कौन हम कौन ना गोटे सिंगल क्लिक करार अच्छी ऑप्शन साइड रे गोटे राउंड बटनटा थी से क्लिक करेंगे आपंकर आंसर रे चूज हो गला। आपन को जो बुले बुलेबार जिनस थिला जो टाइम टेकिंग नबार थिला से जिनस आपनकर बहुत टाइम सेव हो जिवो बुझछन तो से आप पेनिक करंतु आप माउस को हलैला कि आपनकर क्रॉस एयर ऑटोमेटिकली जेमति सपोज मु आपन को ये करछु एटा देखो सपोज एटा रहिला क्रॉस एयर एटा व्हाइट कलर एमती थिबो। सपोज मते ए रे आंसर टाइप करिवार अछि तो मु एटी ए रे क्लिक करले ए आंसर चूज हे जो बी रो धर ऑप्शन अछि बी चूज करले क्लिक हे जो सी करबे तो एठी पैनिक करिवार किसी जिंस नाही हैला नॉर्मल जिंस रुहंतु आराम से आंसर करंतु सब जिंस ठीक हबो। ओके तो एटा हमर आंसर हैला सी। नेक्स्ट, the vaccination was first performed by वैक्सीनेशन कहा द्वारा फास्ट परफॉर्म होइतिला? जोनास सल्क, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 170 बी समस्त ठीक अच्छे आंसर एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the humoral immunity is based on production of antigen, production of antibody, formation of vaccine, all of the above। 171 बी ठीक अच्छे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, सेलुलर इम्यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलर इम्यूनिटी कोठो डिराइव होची? बोन मैरो डिराइव लिम्फोसाइट, थाइमस डिराइव लिम्फोसाइट, आरबीसी, प्लेटलेट। बी 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 ओके थाइमस डिराइव लिम्फोसाइट। देवकृष्ण बोन मेरो हबनी सेलुलर इम्यूनिटी पचारिची बी हबो आंसर हैला थाइमस डिराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सेकंड एटा हबो आंसर।
The goal of mission Indradhanush launched by government of India is to मिशन इंद्रधनुष लॉन्च करिवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोल कोन थिला को आंसर को तंटी कथा करी गलानी आ पांच सातरा करिके क्लोज कर दो 173 vaccinate to all under 5 कोटा वाला आंसर ना सी The stages of malaria parasite enters in the man during asexual cycle is कौन होगा स्पोरोजाइट्स स्कीजॉन्स मागो ए सब आंसर आछी ठीक अछि 174 ए नेक्स्ट एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट आर कौन होबो रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन कंपोनेंट ऑफ मॉडल क्लिनिकल साइन लास्ट क्वेश्चन एटा बिकॉज मत तंटी बथा करी गलानी म कंटिन्यू करि पानी तो एटा लास्ट क्वेश्चन आंसर करंतु समस्ते 175 सी समस्तंकर आंसर ठीक अछि कंपोनेंट ऑफ मॉडल हैला ओके 3 घंटा हो गलानी ऑलरेडी क्लास आमे आको बाइंड अप करबा कहीं ना देखो आहुरी क्वेश्चन अच्छी बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी 175 पहुँचले पीपीटी रे ऑलरेडी 254 अच्छी देन आहुरी आगु को अच्छी हैला तो आमे आको एठी क्लोज करबा आज थैंक यू समस्त जॉइन करथिबारु जो माने भी चाहूचंती जे हमर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करबा पई से माने ए OSSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जो 20 टेस्ट वाला टेस्ट को नहीं पारिबे जो माने चाहूचन जे आमे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करबा से माने नर्सेट रो एमसीक्यू क्वेश्चन को देखिबे एंड जो माने मैराथन क्लास हमर परचेस करबा पई चाहूचंती हमर एई भला डेली क्लास डिस्कशन टिल OSSSC एग्जाम जाय होबो ताकू जो माने चाहूचंती से माने परचेस कर परिबे और जो माने टोटली प्रैक्टिस करबा पई चाहूचन जे हमर ओएमआर बेस हो बट आमे प्रैक्टिस करते चाहूचे तो आमे ओएमआर बेस करबा थैंक यू ऑल ऑफ यू हला गुड नाइट ओके मु कर देबी आज पढ़ी की हाँ देवकृष्ण कौन टा पढ़ी की आज कर दबो गुड नाइट सर गुड नाइट को मु बुझी पालेनी कौन टा ये कर दबो जानी पालेनी पीडीएफ टा सेंड करी सर ग्रुप रे मते पर्सनली सेंड करिवे सर ग्रुप रे पीडीएफ केवल से मान को मिलवा जो माने मैराथन क्लास रे अछन रेडियो हला ओके गुड नाइट समस्त गुड नाइट काली पुणी देखा हबो 7 रु 10 हला सब्जेक्ट मु आपण मानकू ये रे कहि देबी थैंक यू 13